Yeah, number 2. Lord, this is the case in which जी after the आफ्टर द absorption of the petitioner, my Lord, they say that since they have been paying the petitioner as daily wages and therefore they're treating him to be a daily wager, they have terminated him as per the circular. For that, your Lordship directed them to call for the CEO to explain as to how this could be done, Lord. जी माय लॉर्ड, जी आपकी अनुमति हाँ हाँ आपकी अनुमति से हाँ, सर please फैक्ट बताइए। रखना चाहता हूँ सर। प्लीज बताइए। सर जो पिटिशनर है सर, इसको सर 19/9/97 को सर अस्थायी पद पर ड्राइवर जीप चालक के पद पर सर देवसर में रखा गया था सर। 1997 डेट बताएंगे प्लीज प्लीज। सर 1997 सर। हाँ ठीक है सर इसके बाद सर इन्होंने सर जब नियमितीकरण के लिए पहल करी सर, उसमें सर ये माननीय उच्च न्यायालय ही आए सर, रिट पिटीशन 41/15/12 के माध्यम से सर आए सर। और उसमें सर माननीय न्यायालय 15/15 सर 14/15/12 सर 41/15/12 सर 41/15/12 जी ठीक सर। सर उसमें माननीय न्यायालय ने सर जो आदेश किया सर, उसमें सर ने ऑर्डर डेटेड 27/6/12 में सर बहुत स्पष्ट ये कहा सर कि इस प्रकरण का निराकरण सर उमा देवी वाले मामले पे दिए गए जीएडी के निर्देश के अनुरूप होगा सर। उसके लेकिन सर आगे बात ये हुई सर कि देवसर जनपद ने सर उसको सामान्य प्रशासन समिति में करके और फिर जिला पंचायत की स्थायी समिति से करके और संविलियन करने जैसी कार्यवाही करी। मेरा निवेदन यह है सर कि ये जो प्रक्रिया हुई थी सर, ये अधिकारिता विहीन थी सर। इस प्रकरण का निराकरण उमा देवी वाले आदेश के नहीं, जो कार्रवाई हुई थी सर उसको कब निरस्त किया आपने? ये जो कार्रवाई हुई थी ना जी सर देवसर में, फिर जनपद पंचायत में और कहाँ सर वो सब कार्रवाई इलीगल थी। उन लोगों को कुछ नहीं मालूम था, आपको सब मालूम है, तो आपने कब निरस्त किया उस कार्रवाई को? वेयर इज द ऑर्डर सेटिंग असाइड द अर्लियर प्रोसीडिंग्स? सर ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं। तो फिर आपके ऊपर आपके प्रेडिसेसर द्वारा पारित आदेश बंधनकारी हैं कि नहीं है? मतलब ये हो जाएगा, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज जितने लॉ प्रेसिडेंट हैं, जितना भी कानून आज तक बना है इतने सालों में, उस सबको मैं एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बिगर यह बताए हुए कि कैसे वो जो है लागू नहीं होता प्रकरण के तथ्यों में, और बिगर उसको डिस्टिंग्विश किए हुए बोल दूं कि वो लागू नहीं होगा। तो जो भारत का जो है आज 150 साल से ऊपर का जो इतिहास है, न्यायिक इतिहास है, कोडिफाइड इतिहास है, हाई कोर्ट्स वर मेड इन द 19th सेंचुरी है, वो सब एक पेन ऑफ स्ट्रोक ऑफ पेन से खत्म हो जाएगा। निवेदन साहब इनका ये था कि सर पिटिशनर बैकडोर एंट्री। अरे बिल्कुल ठीक है, बैकडोर सभी तो बैकडोर एंट्री है। इनसे पूछे ये कैसे आए थे? ये गलत कहता। नहीं एक मिनट, ठीक है, सभी बैकडोर एंट्री है यहाँ पर। तो आपका आदर्श शासन में जितने आपने डेली वेजर भर्ती किए हुए हैं, इसीलिए तो उमा देवी आया, इसीलिए तो उन्होंने इलीगल और इरेगुलर अपॉइंटमेंट की बात कही, इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जो है आपने कितने लोग। चलिए अगर इनकी बात मान लेते हैं तो चीफ सेक्रेटरी का एफिडेविट बुलवा लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने लोग बैकडोर एंट्री हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। Sir, my last date of hearing, after reading the resolution which have been passed for affirming the order, ask the authorities that how, when it has been approved by the board, how can they turn back? वही तो पूछ रहे हैं इनसे, थोड़ा बताएं तो। सर हाँ बिल्कुल बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से बेगर घबराए बोलिए। 2003 में सर वाहन चालकों के सभी स्थायी और अस्थायी पद सर एबॉलिश किए जा चुके हैं सर। हाँ। इनको सर चूंकि ये क्लास 3 का पद है, तो किसी भी तरीके से सर उस संविलियन की प्रक्रिया से भी सर या कि नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, प्लीज, लेकिन आपके पूर्व अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी करके अनियमित जो भी कार्रवाई करी है या अन्य किसी प्रयोजन से या दबाव में आके कार्रवाई की है, उसको निरस्त करने की क्या प्रक्रिया होगी? अनलेस यू सेट इट असाइड। ठीक है, कल को एक आप किस पद पर हैं? सर मैं सीओ जिला पंचायत हूँ। सीओ जिला पंचायत है, आप आईएएस ऑफिसर हैं सर, कि डिप्टी कलेक्टर हैं? 2016 बैच का आईएएस। 16 बैच का आईएएस ऑफिसर है। प्रमोटी हैं, डायरेक्ट हैं? सर प्रमोशन से आए। कल को कोई आपका कह दे कि आपका डिप्टी कलेक्टर के पद पे जो अपॉइंटमेंट था वो इलीगल था, ठीक है, इसीलिए आप सीईओ जिला पंचायत का पद धारण करने के लिए ऑथराइज नहीं है, ठीक है, मे बी राइट मे बी रॉन्ग। तो बिगर इस बात को देखे हुए कि आपका अपॉइंटमेंट किसने किया था, कैसे हुआ था, उस अपॉइंटमेंट को सेट असाइड किए हुए हम आपका आईएएस का नोटिफिकेशन रद्द कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? थोड़ा बताइएगा।
है। हमें क्या देखना पड़ेगा कि आपने उस वक्त जो है, जब आप डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट हुए थे, तब किन परिस्थितियों में अपॉइंट हुए थे, और वेदर योर अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट एज डिप्टी कलेक्टर वाज लीगल और नॉट। ठीक है, इफ इट वाज इलीगल, प्रिज्यूमिंग फॉर अ मिनट, इफ इट वाज इलीगल, then we are required to set it aside. We means if the complaint is made to GAD, or now you are an IS officer, so you will be dealt by the Ministry of Personnel and डेफिनेटली। ठीक है, तो वो देखेंगे पहले, देखने के बाद में उचित कार्रवाई होगी। सब तो ये जो आपको जो ये IS की पदवी दी गई है, इसको वापस लिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस ड्राइवर के साथ में जितनी इलीगैलिटी हुई थी, आपको वो रिजोल्यूशन निरस्त कराना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। उसके लिए इसको सुनवाई का मौका देना पड़ेगा, और जब तक आप ये सब कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक का जो है आपके सारे आदेश इलीगल हैं। ठीक है, हाँ बताइए ना, अभी इनको पहले पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप निवेदन करिएगा। हाँ बताइए। अब माननीय न्यायालय, बस मेरा इतना ही सबमिशन था सर कि नहीं, अरे आपके पूर्व के सारे अधिकारी भ्रष्ट थे, कानून नहीं जानते थे, सब मान लिया, लेकिन आप तो कानून के हिसाब से काम करिए। सर मैं इस प्रकरण में सर अभी जब 5 फरवरी को ये प्रकरण में सर ने बुलाया, तभी मैं सूचित हो सका सर। 1 साल की अवधि में मेरे को इस प्रकरण के बारे में कभी कोई ऐसा आया नहीं। पैरा 8 का रिप्लाई तो आपके पास से आया है, और उसमें आपने स्पष्ट कहा है कि एज पर रूल इनको वो किया गया था, जो रूल आपने रिलाई किया था अपने ऑर्डर में, उसको इन्होंने बेस माना। पैरा 8 of their reply. Para 8 of their reply. एक सेकंड। And therefore that contradiction was therefore your lordship's called. Their reply was filed in 2019. अरे अभी सर। सर मैंने सर अभी कहाँ है वो? ये ना 19/2/2024 को। 19/2/24 को एफिडेविट जो आपने कॉल किया था 56/2024। सर ये एफिडेविट सर सर ने मुझे सर इस बात के लिए निर्देशित किया था सर कि आप पैरा 8 देखेंगे उसका। आप पैरा 8 पढ़े ना। That the answering respondent respectfully submits that the petitioner was initially appointed as daily wager and not in regular establishment. It is submitted that Chief Executive Officer, being an appointing authority, can pass the order of absorption as per sub rule 4 of rule 7 of rules of 1999 as per the requirement of work, and there was no person who was available for the post of driver, and in compliance of the order of Honorable High Court passed in WP number 4115 of 2012 dated 27/6/2012, the order of absorption dated 31/12/13 has been passed after recommendation of General Administration Committee and approval of the Commissioner Panchayat Raj Bhopal. And thereafter, my lord, in para 12, they made a contrary statement. Therefore, your lordships called the officer to explain as to how there can be a contradiction. Once you have absorbed the person, how can he be treated as daily wager? Daily wager. समझाइएगा थोड़ा सा। सर मेरा निवेदन बस ये है सर कि माननीय न्यायालय नहीं, निवेदन तो आपका सुन लिया, कानून बताइए थोड़ा सा। आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, आपने 2 एकेडमियां देखी हैं, राज्य प्रशासनिक अकादमी भी देखी, मसूरी की भी देखा है आप, और आपने तो थोड़ा सा बताइए कानून क्या है, कानून क्या है इस बिंदु पे, क्या कानून पढ़ाया आपको 2 अकादमियों में? सर चूंकि दैनिक वेतन भोगी की सेवाएं थी सर, तो उसका निराकरण सर माननीय न्यायालय के जैसे आदेश रहे हैं सर, उसी तरीके से अगर नहीं किया किसी अथॉरिटी ने, तो आप आज क्या 10 साल 11 साल बाद उसको एक तरफा निरस्त कर सकते हैं कि आपको कानूनी रूप से नोटिस देना पड़ेगा? अच्छा, तो निरस्त कर दिया उसको आपने? हाँ सर, टर्मिनेट किसको टर्मिनेट कर दिया सर? कहाँ है वो इंक्वायरी जिसमें यह बात आई है इंक्वायरी में कि आपका रेगुलर एब्जॉर्प्शन जो है वो गलत था? सर दैनिक वेतन भोगियों के लिए जो नियम थे सर, एग्जिस्टिंग रूल 13 के सर, उसकी प्रक्रिया और उसमें सर जिस तरीके से भी कदाचरण वर्णित है सर, इसका कदाचरण है, इसने खुद अपने आप ऑर्डर पास कर लिया था कि आपके किसी पूर्ववर्ती अधिकारी ने आदेश पारित किया? माननीय न्यायालय, उसके दूसरे कंडक्ट पे बात हुई थी सर, स्थापना या कि उसकी संविलियन के ऊपर कोई भी बात नहीं थी सर। तो फिर जब तक स्थापना और संविलियन को आप निरस्त नहीं करेंगे, तब तक बाकी कंडक्ट से क्या हो जाएगा? सर उस लाइन पे सर कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई। तो फिर क्या करेंगे बताइएगा सर। उस संबंध में सर जो भी आवश्यक कार्रवाई है सर, या कि जो गलत हुआ है सर, उसके लिए मैं जरूर सर विभाग से सर रिक्वेस्ट कर सकता हूं। तो कितना समय लगेगा आपको विभाग से कार्रवाई करने में? सर 2 महीने तक सर लिखिएगा सर। श्री अनिल लाला, तब तक यू विल मेंटेन द स्टेटस को? सर अभी वो सेवा से बाहर हैं सर। अच्छा, आउट ऑफ जॉब? 27/2016 से सर बाहर हैं सर। अच्छा ठीक है, चलिए। श्री अनिल लाला, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर। श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट, along with श्री गजेंद्र सिंह, प्लीज, CEO जिला पंचायत सिंगरौली। श्री गजेंद्र सिंह submits that the proceedings of absorption of the petitioner
were illegally carried out. Full stop. On 19/7/1997, petitioner was appointed as a driver on daily wage basis. Full stop. In WP 4115/12, directions were given to consider case of the petitioner on the touchstone of the judgment of Supreme Court in Uma Devi. Full stop. Thereafter, instead of considering the case of the petitioner on the touchstone of the law laid down in case of Uma Devi, since post of driver, which is a class 3 post, was abolished and there was a ban on filling those posts, the order of absorption on the recommendation of the General Administrative Committee, which was approved by the state government, that is the Commissioner Panchayat Raj, सर जी सर Commissioner Panchayat Raj Adhiniyam, are illegal and therefore petitioner was thrown out of the service. Next paragraph. It is submitted that 2 inquiries were conducted against the petitioner. However, it is admitted that no inquiry was conducted so to examine the correctness or otherwise of the absorption of the petitioner against a regular post. Full stop. He prays for and is granted 30 days time to bring on record all the proceedings starting from the day of his appointment till the date of his absorption and thereafter the inquiries which were conducted resulting in termination of his service on record. Full stop. Let necessary documents be filed within 30 days with clear pointing out that once the proceedings of absorption have attained finality and have not been set aside, then how the clock can be set in a reverse motion only at the request of and understanding of law by Shri Gajendra Singh, Chief Executive Officer, Jila Panchayat, Singrauli. List on. Those proceedings were seen by your lordship on the last date of hearing. ठीक है, इनको सब लेके आने दीजिए इनको, जिससे कल को ये ना रहे कि कुछ लाने से छोड़ दिया गया है. लिस्ट आपने देखकर ही पिछली बार ऑर्डर किया. हाँ, लिस्ट ऑन. आठ अप्रैल 2024. थैंक यू सर. Last year, certain direction was passed by this honorable court in light of submission of the respondent. The state government was directed to seek instruction. Lord, I'm praying 2 weeks time for compliance of. क्या है? हाँ, क्या हुआ आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को? We have sent the letter, my lord. They are. सेंड लेटर. फोन आजकल बंद हो गया क्या? उन्होंने बोला थोड़ा सा समय ले लें साहब से, क्योंकि नहीं, कितना समय ले लें? चुनाव की अधिसूचना तक, नहीं जिससे फिर ये कह सकेंगे चुनाव की अधिसूचना आ गई, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. एक्स्ट्रा मैटर है साहब ये. हाँ, मुझे मालूम है किसका लेटर है. इन्होंने 4 पद जो है निकाले हैं और उसके लिए अनुमति मांगी है उन पर रेगुलराइज करने के लिए. 16 फरवरी को भेजा है इलेक्शन. हाँ ठीक है. हाँ, फिर इलेक्शन कमीशन का ही काम नहीं कर पा रहे. 1 हफ्ते में लेकर आइए. लिखिएगा श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव फॉर द पिटिशनर. अनूप श्रीवास्तव फॉर द पिटिशनर. Siddharth Seth for respond number 1 and 2. Shri Manas Mani Verma on oral instructions of the Principal Secretary General Administration Department prays for and by way of last indulgence granted 7 days to make compliance of the earlier order, failing which this court may be constrained to order for personal presence of the Principal Secretary GAD. List on 6 मार्च 2024. Number 4. May I please, my lord. Hmm. The last date of hearing, my lords, were pleased to direct, my lord, the state to produce 2 circulars. जी. Yes, sir. ये दे देंगे सर. Absorption का power है. जी जी. My lord, the issue is, my lord, that whether the services can be absorbed of a
शिक्षाकर्मी ऑफ पंचायत इनटू द म्युनिसिपल एम्प्लॉइज में। जी, कहाँ है ये, क्या कहते हैं सर? पढ़िएगा ना, इसमें कहाँ लिखा है ये कैडर चेंज करने का? ये लीजिए, कॉपी है स्पेयर की दूं आपको? जी है। हाँ तो बताइएगा पढ़ के कहाँ लिखा है इसमें कि आप पंचायत से नगर पालिका वाले संवर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। वो रिप्लाई देख, लास्ट डेट ऑफ हियरिंग। अरे मैं तो सिर्फ आपसे निवेदन ये कर रहा हूँ। साहब रिप्लाई जब हमने पढ़ा था तो साहब आपने बोला था ये दोनों सर्कुलर। हाँ तो सर्कुलर पढ़ के बताइए ना कहाँ लिखा है इसमें, कौन से पैराग्राफ में लिखा है? बोलिए। पढ़िए, रिप्लाई पढ़ें फिर से आइएगा, रिप्लाई पढ़ते हैं आपका। कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है रिप्लाई का? मेरा एक निवेदन था सर, अगर स्टेट का स्टैंड जो है था, जो मेरी पिटीशन है सर, उसमें जो स्टेट ने इनिशियल रिप्लाई फाइल किया था वो देखना सर, उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकल लिखा है कि इनका संविलियन नहीं हो सकता था। वही तो पढ़ना है, आप ही की तो पिटीशन है ये 4 नंबर पर, रमाकांत शुक्ला सर। उसी में जवाब देखना है ना सर मैं बता रहा हूँ, इसमें सर जो स्टेट का रिप्लाई है, P11 सर पेज 57। P11 पेज 57 जी, पढ़िए। मैं रीड में, हाँ प्लीज। सेकंड पैराग्राफ जी। So, as far as answering respondents are concerned, they have no role to play in the matter because the petitioner and respondent number 5 to 7 were the Shiksha Karmis, and after abolition of the post, Shiksha Karmi they have observed in the cadre of absorb होना चाहिए जी, स्टेनो की गलती है सर जी। It is out of place to mention that the post of Shiksha Karmis is not the post working under district education officer and school functioning under his control, but Shiksha Karmis are contract teachers appointed by local bodies in Panchayat. The appointment of the petitioner was made by respondent number 3, whereas the appointment of respondent number 3, whereas the appointment of 5 to 7 were made by Janpat Panchayat. It is further pertinent to mention that the petitioner and 5 to 7 were absorbed in the cadre of Adhyapak, and the gradation list of Adhyapak has to be made separately by municipal corporation and also by Panchayat. Because the school functions under the municipal corporations and Panchayat are different and separate gradation list is prepared. Okay. It is for the municipal corporation to explain as to how the name of 5 to 7 have been placed above the petitioner, though they are not the employees of municipal corporation. Okay. As far as answering, Mary, as far पढ़िए। as answering respondents are concerned, they have no role in the preparation of gradation list and also granting promotion to the petitioner and respondent number 5 to 7. Accordingly, it is for the municipal corporation to explain as to why petitioner has not been granted promotion to the post of Varish Adhyapak and as to how respondent number 5 to 7 have been placed above. So, the state has taken a stand that their name should not have been placed in the list of the municipal corporation. फिर कहाँ से लिया गया, यही तो पूछना है इनसे। यही तो केस है ना गिल्डियाल साहब का कि हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया सर। अब एब्जॉर्प्शन हो गया, उसमें इशू ये है कि हमारा इनिशियल डेट से सीनियरिटी मानी जाएगी, यही है ना। सर मेरा रिस्पेक्टफुल सबमिशन है कि सर एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं सकता था। मैं वही तो पूछ रहा हूँ सरकार से। सरकार ने 2 सर्कुलर का हवाला दिया था ना, जो रिप्लाई बाद में दिया है 14806/23, ये भी सरकार का ही रिप्लाई है ना। 14806 रिस्पॉन्ड नंबर 1, 2, 2 and 4 का, ठीक है। पैरा 4 में हाँ पैरा 4 as far as answering respondent are concerned, they have no role to play in the
Letter because petitioner and private respondent where the शिक्षा वो तो वहीं का वहीं उठा के उन्होंने कॉपी कर दिया है, कट पेस्ट है ये बताइएगा कि सर्कुलर लगा था आगे हाँ कहाँ लगा है? हाँ, तीन है R11 आंसर रिस्पॉन्डेंट ऑफिशियल लेटर नंबर इतना P तीन है उसको तो उनको P9 वापस भेज दिया है सर। है, R1 देखना है, P9 देखना है, R1 इसी के साथ। हाँ जी, पिटिशनर की पहले वाली पिटीशन थी साहब हाँ 15 की हाँ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28/6/18 में संविलियन को अवैध घोषित किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक 7 श्रीमती प्रमिला दुबे अध्यापक सेवाएं जनपद पंचायत की हैं। इसी निकाय द्वारा अध्यापक मतलब इनका जो एब्जॉर्प्शन था वो गलत हुआ था। इनके सर्विसेज साहब पुराने निकाय को वापस कर दिए। ठीक है दीजिएगा, WP का ऑर्डर निकालिए, लिखिएगा WP नंबर ये सर इसमें है। लगा है। अच्छा कनेक्शन 28/6/18 P12 सर। P12 जो सर उस दिन सीनियर ने पढ़ा था वही वाला ऑर्डर है सर। हाँ, 61 जी। उसके बाद क्या बस, तब आपको वापस ही जाना है गिलडियाल साहब? आदित्य वीर सिंह वापस जाइए, वापस जाके अपनी सेवाएं करिए वहां पर। सर इनिशियली तो ये डिस्प्यूट था ही नहीं सर, वो तो जब नया रूल आया तो इन्होंने वही जब इनके ऊपर रख दिया गया, जब तक आप जो है Yes, इनके ऊपर नहीं थे तब तक इनको आनंद की अनुभूति थी, जैसे ही आप ऊपर आए इनको करुणा की अनुभूति हो गई। दैट इज द यही हुआ ना इसमें, है? एग्जैक्टली। अब आपको ये बताना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा कि किस प्रावधान में आप ऊपर आ सकते हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकता है। सर वो सर्कुलर भी नहीं हमारे पास। सर्कुलर ये लीजिए ना, इसको पढ़ लीजिए, नॉट कीप इट इन द पासवर्ड। ये लीजिएगा, पासवर्ड में रखिएगा, सर्कुलर भी इनको पढ़ के बताइएगा। सर एक रिव्यू भी इन्होंने उस ऑर्डर का सर जो अभी आपने देखा हाँ। उसका एक रिव्यू भी फाइल किया था। दैट फैक्ट हैज नॉट बीन क्लोज्ड इन मैं दिखा दूंगा वो ऑर्डर। ठीक में भी P12 का रिव्यू फाइल किया सर। हाँ सर, दैट फैक्ट हैज नॉट बीन क्लोज्ड इन देयर रिट पिटीशन। जी चलिए नेक्स्ट केस। Serial number 5. Pradeep. My lords, on the last date of hearing, my lords requested the personal appearance of the officer. आ गए हैं वो, मैंने कंप्लायंस कर दिया। कंप्लायंस कर दी है। 17B का कंप्लायंस के लिए था। Lecture A2 my lord showing that payment of 59,425 is paid to the respondent. हाँ फिर My lords, the कब issue, कंप्लायंस किया? ये 48 से 60 कितना पैसा दे दिया आपने? पूरा दे दिया जनवरी तक का साहब। दे दिया है ना, चलिए। my lords, the issue was which was before this honorable court in the last date of hearing was that the compliance should be made from the date of the order. My lords, the compliance has been made from 1/4/2021 अच्छा and the order is dated 3/3/2020. यस बताइएगा। 3/3/20 का जब लेबर कोर्ट का आदेश है तो आप कंप्लायंस 1/4/21 से क्यों कर रहे हैं? इसको पास ओवर कर दे हम हाँ? पास ओवर। अच्छा देखिए, श्री मानसवनी वर्मा when posed with the problem that the compliance of the labor court's award is to be made from the date of the award, that is 3/3/2020, whereas it has been made with effect from 1/4/2021. Praise for Passover. List this case in the Passover round. सतना बहुत दूर नहीं है, बुलवा लीजिए, मेरे ख्याल से उनको उचित रहेगा मैं पूछ बताना। ये आपके अधिकारी खड़े हैं, ये क्या बता रहे हैं?
बात बताइए सर, पूछ रहे हैं कि जब जिस तारीख का अवार्ड था तारीख से पेमेंट क्यों नहीं? हाँ प्लीज बताइए ना। सर 17 वीक है इसमें सर। सर कोर्ट के में अगर हाई कोर्ट में से तब तक पेंडेंसी रहती है उस पीरियड का सर विजिट देना है सर। अच्छा अच्छा, उसके पहले का देने की आवश्यकता नहीं है। पढ़िएगा 17 भी पढ़िएगा, चले हम भी सीखें आप भी सीखें, थोड़ा कीजिएगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट चेक दीजिएगा। If I may, किस पद पर हैं आप? रुक जाइए अभी, आप किस पद पर हैं आप? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, चलिए पढ़िए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का 17 भी पढ़िएगा, लाए होंगे ना आप, पढ़िए पढ़िए। any case in court, trial as per trial number it's about direct statement and the impact of about shall be liable to pay such payment sittings in the High Court of to get passed on by chief of maintenance about that within the work तो अगर आपकी ये बात माने कि आपने 1 साल बाद लगाया है पिटीशन 3/3/2020 के, तो डिले एंड लेचेस पे ही खारिज कर देते हैं आपकी पिटीशन। हम डिले एंड लेचेस पे ही खारिज कर देते हैं। आप जितना आगे आगे चलेंगे हम उससे थोड़ा सा और आगे आगे चलेंगे। आप नहीं समझ पाए थे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मतलब आई एम प्रेइंग टाइम टू कंप्लायंस 17 कल तक कंप्लायंस कर दीजिए इसकी। 3 दिन का दे दें सब, वो ऑनलाइन पेमेंट में सब प्रोसेस होता है। श्री मानस मणि वर्मा, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, अलॉन्ग विद श्री, आपका शुभ नाम बताइए। श्री सौरभ सिंह, डिस्ट्रिक्ट क्या है आप? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर सतना। सतना। श्री आराध्य श्रीवास्तव. आराध्य श्रीवास्तव फॉर द रिस्पोंडेंट। श्री district program officer, after arguing for some time, raised for 3 days time to make compliance of section 17B with effect from 3/3/2020. He is granted 3 days time to do the needful list thereafter. Obliged, madam. number 3. My lord, this is a review petition, my lord. My lord, first of all, I want to draw the attention towards the IA number 19776 of 23, ma'am. 19776 of 23, my lord. Explaining the reason of my absence on the date of 9th of August 2020. जी बताइएगा। My father was suffering with an ailment, and because of that, I was out of the station, my lord. आपका एडजस्टमेंट था क्या? Yes. एडजस्टमेंट था, कॉज लिस्ट से दिखाइएगा। एडजस्टमेंट था My lord, 9/8/23 की कॉज लिस्ट से दिखाइए whether you were adjusted. I have filed the adjustment, my lord. कहाँ है एडजस्टमेंट बताइए ना, वही तो पूछ रहा हूँ। 9/8/23 की कॉज लिस्ट देखिएगा। No, my lord, नहीं था, my lord. एडजस्टमेंट नहीं था ना? Yes. चलिए अब आगे बढ़िए। देखिएगा, petitioner's contention is that he could not appear before the court on 9/8/2023 as there was a bona fide urgency to attend his father at a hospital at Asian Institute of Urology and Nephrology, Hyderabad, as his father was suffering from cancer of kidney and for which he required immediate medical attention. Next paragraph. Taking these facts into consideration, application for review is allowed. Earlier decision order dated कब का है वो? 9/8/2023. 9/8/2023 is withdrawn. Petition is restored to its original number. Petitioner is permitted to argue the case on its own merits. List after a week. Deeply obliged. सुनील पांडे, यशोवर्धन शुक्ला.
Compliance of last order, my lord, we have filed the application along this order. काय का ऑर्डर है? Order ये था साहब कि respondent employee has approached to authority for use of restatement award or not. जी मेरी बहस इस आधार पे थी साहब कि इन्होंने कभी भी रेस्टेटमेंट नहीं मांगा और ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट में पेमेंट मांगा। हाँ यस यस यस। तो कहाँ है वो डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में एप्लीकेशन में लिखा, पेज नंबर इनका जवाब में लिखा, मैं देखने पर ही लिखा, हमने क्लियर की हुई है। क्या लिखा है? कौन से जवाब? पेज नंबर 4 ने जो अबेंड है डॉक्यूमेंट, पेज नंबर 4 वाले देखें, एनेक्चर है पेज नंबर 4 वाले 2770 जी, पेज नंबर 4 वाले। हाँ पढ़िएगा। आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 108 मत पे औद्योगिक संबंध 1960 के अक्टूबर 2002 से सितंबर 2010 का वेतन भुगतान किए जाने और सेवा में पुनः लिए जाने बाबत जी 108 धारा पढ़ने से तो 108 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने 2002 में जो है बाकी सेक्शन डिलीट कर दिए सभी, तो सिर्फ 108 ही बचा हुआ। अरे भाई ठीक है, आपको कब आदेश दिया लेबर कोर्ट ने रीस्टेटमेंट का? 2002 में दिया। 2002 में। उसके बाद आपने कब आवेदन दिए? जजमेंट के डॉक्यूमेंट नंबर जजमेंट का पेज नंबर P7 देखे मतलब सॉरी पेज नंबर डिस्कस ऑफ द लेबर कोर्ट जजमेंट मतलब पेज नंबर पेज 7 से स्टार्ट है। पेज 7 से स्टार्ट है। पेज 7 ऑफ इसी कंप्लायंस ऑर्डर मतलब। अच्छा पेज 7 मैं पढ़ देता हूँ पेज। आवेदक संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक नियुक्त संस्थान में सितंबर 1992 से श्रमिक के पद पर कार्य पर लगाया गया था तथा मौखिक आदेश से मई 97 में उसे सेवा से पृथक कर दिया गया। उसने विभाग में निरंतर 5 वर्ष तक कार्य किया। सेवा पृथक आदेश के विरुद्ध उसने श्रम न्यायालय रीवा में प्रकरण क्रमांक 105/98 प्रस्तुत किया, जिसमें 3/8/2002 को 50% पिछले वेतन सहित पुनः कार्य पर बहाल किए जाने हेतु विभाग को आदेशित किया गया था। उसके विरुद्ध माननीय औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ रीवा में अपील प्रस्तुत की गई, जिसका प्रकरण क्रमांक 16 है। दिनांक 27/8/4 को माननीय औद्योगिक न्यायालय ने विभाग की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर पिछला वेतन 25% पर सेवा बहाल किए जाने का आदेश। उक्त आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अनावेदक के द्वारा विभाग से मौखिक एवं लिखित रूप से विभाग में प्रार्थना की गई, किंतु विभाग द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया। प्रार्थी काम करना चाहता है किंतु नियोक्ता जानबूझकर उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपने कब निवेदन किया कि उसके नीचे देखे, उसकी है ना मैं पढ़ देता हूँ, पढ़िएगा। ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूँ, मुख्य मतलब उसी के नीचे लिखा हुआ है। किस पैराग्राफ पे ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं आप? इसी जो वर्मा जी ने पढ़ा है उसी के नीचे थर्ड 4 लाइन वाले आवेदक और शासन के निर्धारित दर अनुसार वेतन और अनुसार किया जाता है। आवेदन के अनुसार आपसे जो बात पूछ रहा हूँ वो बताइएगा। हाँ, आपने इसमें लिखा है कि विभाग से अनावेदक के द्वारा विभाग से मौखिक एवं लिखित रूप से विभाग से प्रार्थना की गई। और वेयर इज दैट लिखित प्रार्थना? आई एम आस्किंग। 5 पैरा जजमेंट का पैरा 5 देखे मतलब वहाँ क्रमांक 1 से मैं पढ़ देता हूँ मतलब आप इसमें लिखा हुआ है 5 में है और 7 में दोनों जगह डिस्कस किया जाता है। 5 और 7 में चलिए। यस मैम। उक्त संबंध में आवेदक मुन्नालाल वर्मा का कथन है कि वह आवेदक संस्थान में सितंबर 1992 में श्रमिक के पद पर कार्य पर लगाया गया था। उसने मई 97 तक श्रमिक के पद पर कार्य किया। उसने सेवा पृथक आदेश के विरुद्ध श्रम न्यायालय रीवा में प्रकरण क्रमांक MPIR/98 कहाँ है ये पत्र 2009 का? ये पत्र मतलब इसमें आपने ये 2009 के पत्र का लेबर कोर्ट हवाला दे रहा है ना? हाँ, 19/1/2009 का कहाँ है ये? 19/1/2009 वो लेबर कोर्ट के रिकॉर्ड में लगा हुआ और उसे मैं देखना चाहेंगे मैं दिखाई दूं मेरे पास। नहीं ऐसे नहीं देखूंगा मैं। लेबर कोर्ट के रिकॉर्ड में है वो। लेबर कोर्ट का रिकॉर्ड है इसमें? नहीं, रिकॉर्ड नहीं आया। रिकॉर्ड ऑफ द लेबर कोर्ट वी कॉल्ड फॉर लिस्ट दिस केस अलोंग विद द रिकॉर्ड। किया था उसको बिड्डा किया था साहब तो वो तो दिखाया था आपने। अच्छा ये 19/1 का 19/1/2009 9 3/5 फिर उसके बाद 3/5/2008 9/8/2002 कहाँ है ये पत्र? ये पत्र लेबर कोर्ट के रिकॉर्ड में एग्जिबिट है मालडी ये मार्च। अच्छा चलिए बुला लेते हैं। हाँ, लेट रिकॉर्ड ऑफ द लेबर कोर्ट इन केस नंबर 55/MPIRA/10 miscellaneous be called for इसी में from the learned labor court Riva. List this case next week under the same head. IR to continue.
काइंडली सी 20/2/24 में। दिखाइएगा स्पेशल कोर्ट की क्या रिपोर्ट आई है। ऊपर लगी होगी। सही। There is a non-compliance of order dated 20/2/2024. Progress report is shown to be awaited. Let reminder be sent to the concerned special judge and report be called by tomorrow through fax of the email. List this case on 1 March 2024. इसको पहले साइन करके भी लंच से पहले साइन करा के भिजवाइएगा रजिस्ट्री को कॉपी। ऑर्डर शीट डेटेड 19/2/24 में। It was argued in the last date of hearing, and an objection was taken. ये एग्जामिनेशन हो गया है इनका। The objection was that हाँ ठीक है, 2-3 और विटनेस बचे, उनका हो गया ना। हाँ हो गया मैं आप रुक जाइए मैडम। ऑब्जेक्शन ये था सर लास्ट डेट पे कि ये प्रेशर कर रहे हैं, दबाव कर रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गए। मतलब जस्ट ड्रॉ, मतलब आईए नंबर 5408 एट serial number 15 मतलब of the 5408 yes. Lord, may kindly see the statement of both the witnesses, my lord, Afaq and Farhan. Last paragraph of both the witnesses. पढ़िएगा। Para 20, my lord. एक सेकंड। और लास्ट पैराग्राफ का क्या पढ़ना है? Para 20. सर दोनों को hostile declare करा। We have specific cross examined on this point, my lord. Para 20, my lord, if my lord may permit. Para 20 yes. ये कहना सही है कि जिस दिन मैं होटल नूरे सभा में आरोपी को एक झलक देखा था, उसके बाद से ना तो मैंने आरोपी को देखा है, ना ही उसके परिवार के किसी सदस्य को देखा है, ना ही मिला हूं, तथा ना ही उसके परिवार की ओर से या उसकी ओर से किसी भी माध्यम से कोई व्यक्ति आकर मुझसे मिला। ये कहना सही है कि मैं आज भी नहीं बता सकता कि होटल नूरे सभा में क्या हुआ। देयर आफ्टर द सेकंड विटनेस आल्सो, मतलब लास्ट पैराग्राफ सेम एविडेंस, ना हम कोई मिला, ना उनसे हम मिले, ना कोई प्रेशर। हम दोनों ने एडमिट किया सर, कांटेक्ट ही नहीं किया किसी फैमिली मेंबर। यस। इसका पैरा 7 पैरा 2 ऑफ द क्रॉस में। नहीं ये बाकी तो ये क्या कह रहे हैं, कहना सही है कि जिस दिन मैं होटल नूरुस सभा में आरोपी को देखा था, उसके बाद से तो ना तो देखा, ना उसके परिवार के किसी सदस्य को देखा, नहीं मिला, ना ही उसके परिवार की ओर से या उसकी ओर से किसी माध्यम से कोई व्यक्ति आकर मुझसे मिला। ऐसा ना कहीं मैं आज नहीं बता सकता नूरुस सभा में क्या हुआ। ठीक है, इनकी एविडेंस हो गई है, जो मटेरियल विटनेसेस थे इनके प्रोसिक्यूशन के। अब क्या बचा है? There are 17 witness, my lord. हाँ ठीक है। हाँ मैडम बताइए, आपको क्या कहना है? देखिएगा, श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। दिस इज थर्ड बेल एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ इस्माइल इब्राहिम सैयद, सन ऑफ श्री इब्राहिम सैयद, एजेड अबाउट 48 years, under section 439 criminal procedure code. Full stop. Next para. Case crime number 445/2021 is registered at police station Kohefija, district Bhopal. Full stop. Bhopal for offence under section 376 within bracket 2 another bracket n comma 354 C and 506 IPC. Applicant is in custody since 15/11/2022. ये डेट सही है 15/11/22? जी। Full stop. It is submitted that prosecutrix suppressed many material things before the court. Full stop. Firstly, she is already married. Full stop. She suppressed this fact.
There is no document to show that she had obtained a divorce from the first husband. Next para. It is submitted that the evidence of the prosecutrix as well as her major witnesses, namely Shri Mohammad Afaq and Mohammad Farhan, is over. Full stop. There are no chances with the no chances of tampering with the evidence. Trial is going to take time. Applicant be released on bail. Next, prayer is opposed by Shri Nitin Gupta, Deputy Government Advocate for the state, and the prosecutrix who is present in the court in person. Next para. However, looking to the fact that applicant is in custody since major prosecution witnesses have been examined. There are no chances of tampering with the evidence. Without commenting on merits, 1 lakh 2 sureties. Chaliye. जी आपत्ति लाए थे और जैसा कि इन्होंने हर बार जमानत पाने के लिए हम पे ब्लेम करते और इस बार आप पे कोई ब्लेम नहीं लगाया है. सॉरी, इस पे आप कोई ब्लेम नहीं लगाया. बोले कि नहीं हमारा तलाक नहीं हुआ, ये हम लेकर आए हैं. ठीक है, लेकर आए होंगे आप. ठीक है, उसको हम नहीं देख रहे. आपकी गवाही हो चुकी, हमने उसके ऊपर कुछ नहीं कहा. आपकी गवाही हो चुकी, आपके जो मेजर विटनेसेस हैं उनकी गवाही हो गई, उसके आधार पर हमने दिया. ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस. Taking a look at the facts. My argument with this application is going to be that the settled principles of jurisprudence of bail limits are that evidence shall not be appreciated at the time of consideration of a bail application. Yes. On one side, that is striking. The other millet side would say that in light of Article 21 and everything, millets, delay in trial is one ground, millets, which always can impress the court. And can sway the discretion of a court in favor of the applicant. Now, millets, what I would submit is once this is a criminal appeal. This millets is MCR. Sure. Sorry. I would submit millets. एक मिनट रुक जाइए, मैं दूसरा केस देखने लगा. Serial number 10. ट्रायल की क्या स्टेज है आज? Millets, as of now, there are a few more formal witnesses which remain. How many witnesses are remaining? Millets, exactly, I'm not in a position. There are 30. Total 30 witnesses. कितने एग्जामिन हो गए? As per his report, my lord, last millets I have instructions. 23/8/23 कुछ 6 हो गए. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 6 महीने हो गए हैं. Millets, now 9 witnesses have been examined, last being on the 9th of February 2024. देखिएगा, that a status report of the trial be called for from the concerned special judge, POCSO Act and under the Prevention of Atrocities Act, Betul, pointing out that when applicant is in custody since 27/9/21, that is for over a period of 2 years, then why trial is not making progress? Let date-wise explanation along with the proposed program to conclude the trial, date-wise program to conclude the trial be brought on record by the concerned trial court judge. List this case on
7 मार्च 2024। Just point one more thing out for Yeah, me. please. Probably an explanation for that also can be called by my lord. What happened, Millets, in this case is to prove the age of the prosecutrix. Yes. The prosecution brings forward a birth certificate and no other document. Okay. The date of issuance of that birth certificate was much after, in fact, the registration of the FIR. Okay. The delay in trial, in fact, has occasioned because of that. PW5 was the witness who was supposed to come and prove that birth certificate. He comes before the court way back in 2022. He comes to prove the certificate and he comes with photocopies of all the documents on the ठीक है, basis of. इनको आने दीजिए, चलिए। He, in fact, got examined after 1.5 years only. That is the reason. ठीक, चलिए। I knew. Serial number 11, in pass of the 11.1 लॉर्डशिप, इसमें लॉर्डशिप हमारी 389 है लॉर्डशिप, इसमें 307 का मैटर लॉर्डशिप, 10 साल की सजा है लॉर्डशिप, 5 साल हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें 1 साल हमारी माफ भी हो गई लॉर्डशिप। कब से कस्टडी में हैं आप? सिर्फ अभी तो हम 27 में लॉर्डशिप ड्यूरिंग ट्रायल रहे लॉर्डशिप, होगी जजमेंट डेट 8/7/2021 से। हाँ। रिकॉर्ड दिखाइएगा। को-एक्यूज की ग्रांट, को-एक्यूज की बेल हो चुकी है, दिखाइए, वो दीजिएगा पहले। ये आवेदन किसका है? ये सर शिब्बू, यही तो मेन वो है सर। वो कट्टे की जब्ती भी हुई है, फायर। हाँ, कट्टे की लॉर्डशिप जब्ती नहीं हुई लॉर्डशिप। अच्छा। और इसमें जो चोट है लॉर्डशिप वाइटल पार्ट पे नहीं, और इसमें डॉक्टर के द्वारा लॉर्डशिप इसमें बोला गया है कि इसमें ग्रेवियस इंजरी है, डेंजरस टू लाइफ नहीं लॉर्डशिप। 326 का मैटर बनता है लॉर्डशिप, 307। IPCB इधर तक आपको कुछ मालूम ही नहीं है भाई, कहाँ किताबें रखी हैं, कहाँ देखना है। जी, अपील को फाइनली हियरिंग के लिए लगा देते हैं ना, सुन दीजिए। लॉर्डशिप इसमें क्या है, इसमें लिंक अपील है लॉर्डशिप, इसमें कोई एक्यूज्ड की जमानत हो चुकी है लॉर्डशिप। फाइनल हियरिंग के लिए जैसे ही लगता है लॉर्डशिप, इनके द्वारा एडजस्टमेंट लगा दिया जाता है। किनके द्वारा? ये क्रिमिनल अपील नंबर 41/70/2021 में लॉर्डशिप, इसमें कोई एक्यूज्ड की जमानत हो चुकी है। नहीं, इसमें फिक्स डेट दे देते हैं, आज भी एडजस्टमेंट लगाया हुआ है इन्होंने लॉर्डशिप आज भी एडजस्टमेंट डेट दे देते हैं ना, फिक्स डेट लिखिएगा। लिस्ट दीज अपील्स फॉर फाइनल हियरिंग with clear stipulation that no application for adjustment in the connected matter shall be entertained beyond 2/3/2024. List on 6 March 2024, top of the list. Top of the list at 2:15 PM कर दिए, 2:15 PM। चलिए। serial number 10,
last date of hearing, my lords, called for the record of his petition. आगे आपका रिपोर्ट जी, इसको देखेंगे मैडम, फिर फाइनली सुनेंगे. लिखिएगा, रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स इज अवेलेबल. लेट affidavit be filed that when joint proceedings were initiated, then why common proceedings under Rule 18 of the CCA rules was not resorted to. Affidavit of the collector Jabalpur be filed in this behalf. List in the week commencing 22 April 2024. My lords, there is a request. Please don't list this matter for 22nd April. अच्छा, I am having marriage on that day. ठीक है, तो उसके पहले कर देते हैं. Yes. या उसके बाद 29 अप्रैल वाले वीक में कर दें. My lords, before that, on March. मार्च में तो संभव नहीं है. या तो जो है आप 15 अप्रैल वाले वीक में कर देते हैं. लिस्ट इन द वीक कमेंसिंग 15 अप्रैल. चल. My lord, by the impugned order, our two advance increments has been withdrawn by the respondent number 3, my lord. Next, P20 is the चीज के एडवांस इंक्रीमेंट है, फैमिली प्लानिंग के. No, my lord, ये PSD का. अच्छा, क्या जवाब दिया इन्होंने, क्यों विड्रॉ कर दिया? इन्होंने कहा है कि जो ये उसके अंतर्गत नहीं आता है, विभाग के उसके शिक्षण विभाग के अंतर्गत नहीं आता है. नहीं, विभाग के एक्टिविटीज के अंतर्गत नहीं आता है. नाउ द इशू हैज बीन सेटल्ड माय लॉर्ड बाय डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट आल्सो माय लॉर्ड. मैं वो लगाया हुआ है माय लॉर्ड. एनेक्शर और ये दो ऑर्डर्स हैं. नॉट ओनली दिस माय लॉर्ड, ये जो है स्टिपुलेशन जो है इसको विड्रॉ भी कर लिया गया है. We have annexed in the rejoinder, my lord, next P23 and P24. Just a minute. एक से रुक जाइएगा. Yes. If my senior is before another court. तो क्या कर सकते हैं? Yes sir. श्री मुकेश अग्रवाल. हाँ, तो क्या करना क्या है? पास ओवर. पास ओवर करना. रखिएगा, पास ओवर करिएगा. Number 40. Sir, 14.2 we are filing reply to them.
क्या हो गया? I'm seeking permission to file reply today, ma'am. 10:15 बजे मिलती है परमिशन वकील साहब, टाइम से आने की आदत डाल ली है। सत्येंद्र जैन साहब, टाइम से आइए, कोर्ट का समय है, परमिशन 10:15 बजे मिलती है। हाँ, आप क्या कर? लॉर्ड से 40.1 में सर जो रिप्लाई की कॉपी मिली है पढ़ने योग्य नहीं आ रही है सर। लिखिएगा। श्री, आपका शुभ नाम बताइए वकील साहब। आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा फॉर द पिटिशनर। 14.1 में लिखिएगा, श्री सत्येंद्र जैन रेज फॉर टाइम टू फाइल रिप्लाई। राहुल कुमार ठाकुर की तरफ से। Rahul Kumar Thakur submits that the copy which has been given to him is not legible. Full stop. Let legible copy be supplied. Reply be filed by tomorrow. List thereafter. Not any week commencing. Week commencing 8 अप्रैल 2024। Number 15. Recently, this issue has already been answered by the coordinate bench. I have brought on record the said order along with my IA number 1218/14 by the annexure A 12 P14, my lord, page number 52. And this honorable court has held that the petitioners are entitled to get the benefit of revised pay scale of rupees 1150 and 1800. वकील साहब एक मिनट खुल तो जाने दीजिए। I am sorry. किसके साथ फाइल किया आपने? P12 IA number 1218/14. 1218/14। Yes, sorry, 24. Which is file non 25/1/2024. 12 जी P14 page number 52. जी P14 page number 52. Same body. जी In which manner this honorable court has upheld the pay fixation of 1150 to 1800 to the hand from Petitioner's contention is that his case is squarely covered by the law laid down by a coordinate bench of this court in WP number 2 12394/2016 decided on 16 January 2024. This position is not disputed by Shri Manas Mani Verma. Accordingly, this petition is disposed of with the direction that the order dated 16 January 2024 shall passed in WP 12394/16 shall apply mutatis mutandis to the facts and circumstances of the case. इसकी रिकवरी हो गई तो रिफंड का जो रिफंड जो उसमें किया सब हो जाएगा। चलिए, इसमें कॉस्ट भी है 10,000। हाँ, सब मिलेगा आपको, जितना है पूरा का पूरा मिलेगा जी। So record is available. हैं? Record is available. हाँ ठीक है, क्या मैटर क्या है? My lord, this is the case of appointment of the Anganwadi Karyakarta. जी। I was at the second position, but my BPL card was not selected, and I came. BPL card was not
accepted. The objection was कि I haven't filed my BPL card. My आइएगा husband रिकॉर्ड is not. दिखाइएगा, खोलिए रिकॉर्ड खोल के देखिए। बीपीएल कार्ड आपने लगाया था, उतना देख लेते हैं। Yes, ma'am. Objection was that he was not holding the BPL card at the relevant time. हाँ, वो And देख लेते therefore, हैं। क्या थी एप्लीकेशन बुलाने की डेट, क्या थी और लास्ट डेट क्या थी? they have filed that फ्लैग करके दीजिए, ऐसे मत दीजिए। सुनैना पटेल। क्या डेट थी एप्लीकेशन बुलाने की और क्या डेट थी? पढ़ के नहीं आए क्या मिश्रा जी? But पढ़ के my lord. पढ़ के आए थे, क्या डेट है? आपसे डेट पूछना, आप डेट बताई I नहीं। don't have advertisement. Copy of advertisement, my lord. बहुत बढ़िया। निशुल्क केस है क्या ये? No, my lord. पढ़ा क्यों नहीं? लाई दीजिए रिकॉर्ड। Sir, application was called on 6th of February 2016 up to 18th of February 2016. It is R1. And the last date is कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? Sir R1, page 5. R1 किसका है? विज्ञप्ति। रिप्लाई? हाँ, reply sir. 994/22। Sir, 994. 994. हाँ, R1 पेज 5। 9941. The advertisement dated 6th of February 2016 and up to 18th of February 2016. हाँ, लिखा 18 फरवरी तक। सर ये सेकंड पैरा के लास्ट 2 लाइन्स। वार्ड स्थानीय निवासी पात्र महिलाओं के आवेदन पत्र दिनांक 6 फरवरी 16 से 18 फरवरी 16 तक आमंत्रित किए जाते हैं। आपका आवेदन तो 27/10/16 का लगा हुआ है पिटिशनर का। उसमें जो डेट पड़ी 27/10/16 पड़ी, बाद में भी कोई एडवर्टीजमेंट निकला था क्या? मेंशन है जी, 27/10/16 मेंशन है। 27/10/16 मेंशन है 27/10/16 है। 27/10/16 ही मेंशन। हाँ, तो फिर इनकी एप्लीकेशन कैसे आ जाएगी 18/2/16 के बाद में? And they have filed the report of the screening committee, that is at page number 28 of the petition, where the screening committee has specifically mentioned कि अनिल कुमार पटेल जो श्रीमती सुनीता पटेल के पति हैं, उनका पेज 28 पर। यस मिलॉर्ड। क्या लिखा उन्होंने? श्री अनिल कुमार पटेल जो श्रीमती सुनीता पटेल who is the कहाँ पढ़ रहे हैं आप? लॉर्ड पेज नंबर 28। हाँ, सुनीता पटेल के पति हैं, उनका पति हैं
का नाम मात्र ग्राम पंचायत पचोखर की बीपीएल सूची में अंकित नहीं है। विकास खंड स्तरीय समिति द्वारा अनिल पटेल को खाद्यान्न कूपन के आधार पर ही बीपीएल का अंक दिए गए थे, जो अनुचित है। It was found that at the relevant time he was not having the. My lord, on page number 20, my father-in-law, who is the head of the family. उनका नाम है ऑलरेडी? Yes, my lord. Yes. या राशन कार्ड लगा हुआ है इनका? सर एक सेकंड समझे तो इसको, परिवार पत्र लगा हुआ अंबिका प्रसाद पटेल के नाम से। वो नहीं हो सकता, इनके पति के नाम से होना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कहाँ रिक्वायरमेंट है? बस इतना दिखा दीजिए, इतनी सी बात को हम करते हैं। लिखा हुआ है। एक मिनट, ठीक है ना, वो रिक्वायरमेंट दिखा दीजिए। परिवार के मुखिया में पति का ही होना जरूरी है, ऐसा बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड मिस्टर लाला। जी। वंस यू रेज एन आर्गुमेंट एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंक्लूड इट, प्लीज बताइए कहाँ लिखा है कि परिवार का मुखिया मतलब पति होगा? Lord, that is not my argument. नहीं, please, once you say something, once you say something, then you are required to prove it. ये तो नहीं मैंने फाइल किया। मेरा ऑब्जेक्शन ये था सर कि ये 2008 की स्थिति में वो डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं। हाँ, जो इन्होंने परिवार पत्र फाइल किया। आप बता दीजिए कि 2008 की स्थिति में ये जो है रिपोर्ट बता रही है। नहीं, रिपोर्ट गलत बता रही है। ये उनको ये बताना पड़ेगा कि 2008 की स्थिति के बाद इनके परिवार की स्थिति बदली है और ये जो है अब बीपीएल कैटेगरी में नहीं आते, इनका कार्ड निरस्त किया जा चुका है। वो रिपोर्ट नहीं कह रही। रिपोर्ट ये कह रही है कि अनिल कुमार पटेल का नाम नहीं है। रिपोर्ट इज नॉट सेइंग दैट इनके जो ससुर साहब है उनका नाम है, लेकिन वो फर्जी है या वो गलत है। Because a separate card is made for every unit of the family, lord, that is there in the. नहीं, वो बिल्कुल ठीक बात कह रहे होंगे आप। Yes. इसमें इतना बता दीजिए कि ये जो है that document is not on record, but his card has been separately made, lord. खाद्यान्न के लिए इसका कार्ड अलग से बना है। कहाँ है वो कार्ड? वो कार्ड दिखा दीजिए। ये इसका सेपरेटली बना है, जिसमें इसकी पात्रता अलग से बताई गई है। नहीं, बीपीएल नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए जाएंगे, इनको वापस कर दीजिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेने का एक तरीका होता है। नहीं, because if your lordships would see the order passed by the commissioner, this fact has come specifically in the order. पढ़िएगा कमिश्नर का ऑर्डर। जी लॉर्ड। कनेक्शन that is A1 lord. P1। yes lord, P1 lord। जी, क्या कहते हैं कमिश्नर आपके? प्रकरण का अवलोकन करने, पैरा 4 में लॉर्ड। हाँ, प्रकरण का अवलोकन करने से यह पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 5 में कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने पर उत्तरवादी द्वारा अपने आवेदन की कंडिका 2 आंगनबाड़ी केंद्र जिसके लिए नाम आवेदन किया गया जा रहा है में निरंक रखा गया था और बाद में भिन्न लिखावट से पचोखर लिखा गया था, जबकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन क्रमांक 5 अंकित किया गया था। उत्तरवादी द्वारा आवेदन के साथ बीपीएल राशन कार्ड की प्रति संलग्न की गई है, जबकि आवेदन अवधि के पूर्व से ही राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक प्रणाली हेतु पात्रता पर्ची खाद्यान्न व नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक पात्र हितग्राही को जारी किया गया है। उत्तरवादी द्वारा अपने आवेदन के साथ पात्रता पर्ची की प्रति संलग्न नहीं की गई है। इससे यह साबित नहीं कि पात्रता पर्ची में उत्तरवादी व उसके पति का नाम अंकित है। ऐसी स्थिति में उत्तरवादी को बीपीएल का अंक पाने की पात्रता नहीं। इशू इतना नहीं, ऐसा नहीं। एक मिनट जाइए मिश्रा जी, इशू ये है कि बीपीएल की गणना के लिए क्या पैरामीटर्स होंगे। इफ अ पर्सन इज टू बी काउंटेड अंडर द बीपीएल कैटेगरी, देन वेदर द नेम ऑफ द फादर इन लॉ इज सफिशिएंट और नॉट, दैट इज द इशू। पचोखर में अंबिका रामशरण पटेल का नाम दिया हुआ है, 14 अंक दिए हुए हैं। ग्राम सभा द्वारा संशोधित एवं अनुमोदित व अपीली अधिकारी द्वारा जारी बीपीएल सूची में इनका नाम है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप ज्यादा प्रभावशाली थे। नहीं, ये तो इनके पक्ष में पहले वो हुआ था, बाद में अपीलेट कोर्ट से ऑर्डर हुआ। हाँ, तो अपीलेट कोर्ट में आप ज्यादा प्रभावशाली हो गए। एडिशनल कमिश्नर साहब कौन है ये? BS कुलेश,
और उसने कलेक्टर ने भी जब आदेश पारित किया तो ही ओनली कंसीडर्ड दी दैट इनके पास राशन कार्ड है एंड देयरफॉर फैमिली का राशन कार्ड होने से इनकी पात्रता बनती है। हाँ, वहां तो आप बता दीजिए ना, मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि परिवार की बीपीएल राशन कार्ड इज नॉट द प्रमाण ऑफ बीपीएल। तो कहाँ क्या है पॉलिसी में, बताइए तो, आपसे बार बार तो पूछ रहा हूँ, पॉलिसी में पढ़ के बताइए कि क्या क्या चीज को प्रमाण माना जाएगा बीपीएल कैटेगरी के प्रमाण पत्र के लिए। That document is not on record, maybe the state, because state is also silent on this aspect. स्टेट तो जो है वो तो नहीं, they have in their reply specifically stated, my lord, in para 4, my lord. ठीक है। Found that the petitioner was not did not submit the BPL card, therefore the in the lack of BPL card, the benefit of bonus marks of BPL could not be granted. There was no BPL card produced by him before the authorities, my lord, when the this was the stand of the state government. जी जी। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? Lord, I'll read the order of the collector, my lord. Annexure. That is annexure P4, my lord. जी पढ़िएगा। जी my lord. Lord, para 4 onwards, my lord. पढ़िए। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में स्पष्ट किया गया कि शीतलावती को अनुभव के 10 अंक फर्जी दिए गए थे। अपीलार्थी के पति का नाम बीपीएल सूची में होते हुए भी उसे बीपीएल के अंक नहीं दिए गए थे। अपीलार्थी ने बीपीएल के 10 अंक दिए जाने की प्रार्थना वरीयता में होती है। उत्तरवादी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में स्पष्ट किया गया कि अपीलार्थी के ससुर का नाम बीपीएल राशन कार्ड में अंकित है। हाँ, ये आपका कहना है जी। पिता पुत्र की पृथक पृथक आईडी है। अपीलार्थी पति का नाम बीपीएल सूची में ना होने से उसे बीपीएल के 10 अंक नहीं दिए गए। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाए। प्रत्युत्तर में अपीलार्थी अभिभाषक द्वारा यह व्यक्त किया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने के समय बीपीएल नाम सम्मिलित था, बाद में पृथक आईडी तैयार की गई है। राशन कार्ड में पति का सम्मिलित होने से उसे बीपीएल के 10 अंक की पात्रता होती है। प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में प्रकरण का परिशीलन किया गया। प्रकरण अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने अपने आवेदन के साथ 12वीं एवं स्नातक के प्रमाण पत्र, ग्राम पचोखर की मतदाता सूची 2017, बीपीएल सूची, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की है तथा उत्तरवादी क्रमांक ने वर्ष कक्षा 12वीं स्नातकोत्तर होने का प्रमाण पत्र, ग्राम पचोखर का जाति निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय प्रमाण पत्र, परिवार सूची, निर्वाचन नियमावली, राशन कार्ड, छायाप्रति व बीपीएल की सूची प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी किया गया अनंतिम सूची में अपीलार्थी को कक्षा 12वीं में 62.29% व 36.14 अंक, बीपीएल के 10 अंक, स्नातक के 10 अंक, कुल 66.14 दिए गए थे एवं उत्तरवादी को कक्षा 12वीं में 61.86% पर 35.93 अंक, बीपीएल के 10 अंक, स्नातक के 10, कुल 55.93 अंक दिए गए थे, जिससे विरुद्ध उत्तरवादी द्वारा जिला स्तरीय समिति के समक्ष दावा आपत्ति प्रस्तुत किया गया था। सुनीता पटेल को बीपीएल के 10 अंक गलत दिए गए हैं। जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सुनीता पटेल के पति अनिल पटेल का नाम बीपीएल सूची में नहीं है, जिससे सुनीता पटेल को 10 अंक कम उत्तरवादी क्रमांक 1 का चयन करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र के साथ राशन कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है, जिसमें मुखिया के रूप में अंबिका पटेल व अन्य सदस्यों के साथ अपीलार्थी के पति का नाम अंकित है, जिसके आधार पर उसे बीपीएल के 10 अंक की पात्रता है। जी। This was what objected before the commissioner, my lord. जी। That only on the basis of name in ration card will not entitle him to. तो बताइए ना, मैं आपसे वही तो पूछ रहा हूँ कि पॉलिसी क्या है, क्योंकि उसका पृथक से पत्र, बीपीएल का पृथक से कार्ड जारी होता है, वो कहाँ है वही तो पूछ रहे हैं। बीपीएल की सूची में भी नाम है इनके फादर इन लॉ का, पॉलिसी में, पॉलिसी कहाँ है, दीजिएगा। ये वाला पैरा पति का नाम होना जरूरी। So last paragraph. जी है, तो इसमें ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थायी निवासी के प्रमाण पत्र के लिए राशन कार्ड, संबंधित ग्राम नगरीय क्षेत्र के वार्ड की अद्यतन मतदाता सूची, अद्यतन बीपीएल सूची में महिला का नाम दर्ज होना चाहिए। बीपीएल के लिए क्या कह रहा है आपकी पॉलिसी?
जी इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बीपीएल के लिए कोई अलग से कार्ड होना चाहिए। मेलोड इवन एप्लीकेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, आवेदिका एवं उसके पति या पिता का नाम बीपीएल जारी ना होने की स्थिति में परिवार के मुखिया का नाम जिसके नाम से हो वो भी आप लिख सकते हैं। हाँ लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म में पेज नंबर 13 मेलोड। 13 ऑफ द पिटीशन। यस मेलोड। P1 P2 P2 किस उसमें पढ़ रहे हैं? मेलोड थर्ड पॉइंट P2 पेज 13। आवेदिका एवं उसके पिता पति का नाम से बीपीएल कार्ड जारी न होने की स्थिति में परिवार के मुखिया जिसके नाम पे बीपीएल कार्ड जारी है का सरल क्रमांक लिख सकते। जी जी। But the order of commissioner deals with this situation. ठीक। After the coming into force of this Rashtriya Suraksha Khad Adhiniyam, Lord, जी। he has mentioned in the order, Lord, that there needs to be a separate. Where is that provision? Well, Commissioner has mentioned it. That is correct. But where is the provision? Show me the provision. Your Lordship will kindly pass it. Maybe taken up in part. पास ओवर में ले आइए। अधिनियम। हाँ ले आइए। Even my lord, the objection was not raised on that page. पास ओवर में ले आइए। जी। सब रख लीजिए। पास ओवर में ले आइए। जी। Serial number 70. So I'm praying for next week, Your Lordship, please. क्या हो गया? Lordship, I have approached to Ankit Mishra sir in this case. Your Lordship. Ankit Mishra sir को सर हमने अप्रोच किया था Lordship in this higher. अप्रोच किया था मतलब? अप्रोच मतलब he have to argue this case Lordship. उनकी मामा जी की डेथ हो गई। सीनियर एडवोकेट अंकित मिश्रा जी। नहीं Lordship, सीनियर एडवोकेट एंगेज किए जाते हैं। पटेरिया जी कब से अंकित मिश्रा को एंगेज करने लगे? नहीं, he was arguing in this case Lordship. श्री आपका शुभ नाम बताइए? अभिषेक पांडे। अभिषेक पांडे submits that arguing counsel Ankit Mishra is not available as there is some bereavement in his family and prays for adjournment. On his request, case is adjourned. List in petition is already admitted. List for final hearing in part B of the cause list as per its turn and seniority. चलिए। And in this case, the state has filed the application for recalling the order. क्या ऑर्डर रिकॉल करना है? A1 is the order, my lord. A1 क्या है A1? IA number sir 1919. हाँ। This honorable court has pleased to allow the petition without issuing a notice and my lord without affording. This case originates from the order of the coordinate bench passed by Honorable Justice Nandita Dubey in WP 22058/2023. Full stop. Let specific nomination be obtained from Honorable the Chief Justice as respondents are seeking a review of the order dated 5 September 2023. Full stop. Since Honorable Justice Nandita Dubey has attained the age of superannuation, a specific endorsement is required so that tomorrow that may not be made a ground that why this court entertain a review application. Full stop. Registry to do the needful and proceed in accordance with law. Petitioner is working as Samvida A&M, Malad. Samvida A&M? A&M, Malad. Since 2010, Malad. जी। Malad, an application was invited by the respondent for the post of A&M regular post, Malad. जी कहाँ है वो एप्लीकेशन इनवाइट करने की? That is annexure P2, Malad. P2.
पेज नंबर 15 में जी मलाड उसमें जो संविदा कर्मचारी थे उनको 20% अतिरिक्त आरक्षण देने के लिए रूल्स है मलाड जी मलाड पिटिशनर ने ऑनलाइन फॉर्म भरा, दैट इज एन एक्सेप्ट P3 मलाड जी दैट पेज नंबर 18 में जी उसमें मलाड उसमें जो क्या आप संविदा कर्मी का के अनुसार आरक्षण लेना चाहते हैं का जो सेक्शन था मलाड कहाँ उसमें लिखा है? मलाड पेज नंबर 18 पे देखिए मलाड अन्य विवरण है, पहला क्लास है, फिर भुगतान विवरण, फिर वैवाहिक विवरण, फिर अन्य विवरण। अन्य विवरण क्या आप विवाहिता तलाकशुदा है, उसके नीचे क्या आप संविदा कर्मी के अनुसार सीट एवं आयु में आरक्षण लेना चाहते हैं, तो उसको मलाड उसको फिल करते समय यस की जगह नो उसमें भर दिया। फिर उसका रिजल्ट तो डिक्लेयर हुआ मलाड, लेकिन तो आप कैसे चेंज करेंगे? इसको तो फॉर्म को भरते वक्त ही इसमें चेंज करने की भी एक सुविधा रहती है ना, डेट दी रहती है कि इस तारीख तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, किस प्रावधान में हम करेंगे इसको बताइएगा। सुधार के संदर्भ में मलाड प्रावधान बता दीजिए। मलाड 2010 से काम कर रही, सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक हुई मलाड। तो भाई हम आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉर्म भरने के बाद फॉर्म में त्रुटि सुधार के लिए भी एक दिनांक दी रहती है। आपने अगर सुधार नहीं किया, आप इतने कॉन्फिडेंट थे अपने मेरिट के बारे में, तो फिर उसको हम सब्सिक्वेंटली कैसे, बिकॉज दिस विल बी ओपनिंग अप पेंडोरास बॉक्स। हम आज आपको अगर अलाउ कर दें किसी ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पर, तो कल को तो ये सारे आवेदक यहाँ आ जाएंगे कि साहब हमने ये नहीं भरा था, हमने वो नहीं भरा था। लॉ इज वेल सेटल्ड दैट देयर कैन नॉट बी एनी चेंज आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड डेट। लिखिएगा, दिस पिटीशन इज फाइल्ड। उसमें सुधार के लिए उसमें कोई और अलग कोई बात नहीं, इज फाइल्ड by the petitioner being aggrieved of the fact that petitioner by mistake while filling the examination form contained in annexure P2 had mentioned, sorry P2 nahi, P3 had mentioned that she is not seeking any reservation for the services rendered by her as a contract employee. Full stop. It is submitted that the choice was erroneously filled as no, whereas petitioner has been working on contractual basis since 2010 and therefore she be allowed to correct the entry under the miscellaneous details as contained in annexure P3. Box for litigation seeking correction of application forms, and High Court will only be acting as an agent permitting or refusing the correction of application forms, rather doing substantive justice on the touchstone of Article 14 of the Supreme Court. First, Article 14 and 21 of the Supreme Court. Therefore, next para. Thus, when there is no violation of any of the fundamental rights and petitioner had himself filled the choice of not taking any benefit of reservation for contract employees, that entry cannot be allowed to be corrected after examination is over, result is out, petition fails and is dismissed. Number 20. महिला डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल की विभाग को। कब की थी, कब आए थे आप नौकरी में?
आपने हायर सेकेंडरी कब पास की है? हायर सेकेंडरी कब पास की है आपने? 92 92 में। क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसमें? कहाँ है हायर सेकेंडरी की मार्कशीट? P1 my lord. P1 at page 11. Page 11. हाँ। क्या डेट ऑफ बर्थ लिखी है इसमें? Birth certificate. हाँ? Birth certificate. हाँ। सभी रिकॉर्ड में 73 लिखी हुई और वहाँ रिकॉर्ड में 70 लिखी हुई। एक सेकंड रुक जाइएगा। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट में क्या लिखी है आपकी डेट ऑफ बर्थ? हायर सेकेंडरी की मार्कशीट में कहाँ? लीव सर्टिफिकेट फाइल किया है माय लॉर्ड। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन पूना। इस सर्टिफिकेट में जन्म तिथि कहाँ लिखी है आपसे पूछ रहा हूँ मैं। इसमें 10th में रहती है सब, इसमें नहीं। इस एक डॉक्यूमेंट और है माय लॉर्ड, ये पेज नंबर 13 है माय लॉर्ड, ये लीव सर्टिफिकेट। लीव सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा जाएगा, वो प्रिंसिपल बनाता है। आपको यह बताना पड़ेगा कि आपकी मार्कशीट में कहाँ है जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ। ये जन्म प्रमाण पत्र है माय लॉर्ड। जन्म प्रमाण पत्र भी बाद में बना हुआ है, उसको नहीं देखेंगे। जी। आपको हाई स्कूल आपने किया है, हाई स्कूल की मार्कशीट में क्या तिथि लिखी है ये बताइएगा आप। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट में दिखाइए कहाँ जन्म तिथि है आपकी। जितने आप होशियार हैं उससे थोड़ा बहुत हम लोग भी समझते हैं। हायर सेकेंडरी की मार्कशीट में जन्म तिथि कहाँ है उतना दिखा दीजिए। माय लॉर्ड 1 वीक टाइम लिखिएगा, पिटिशनर्स काउंसिल raised for weeks time to bring on record certificate issued by the appropriate board, namely Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education Pune, to demonstrate that what date of birth was mentioned in the said certificate issued by the competent authority from where petitioner had passed higher secondary examination in March 1992. He prays for and is granted 7 days time to do the needful, as other certificates produced by him are of no significance to determine the correct age of birth of the petitioner. चलिए। थैंक यू। My lord, respondent husband डाइवोर्स पिटीशन में 24 का आवेदन पर हमें सर 3,000 रुपये एक मुश्त राशि वाद व्यय में और 300 रुपये पर्सनल अपीयरेंस में भर दिया है हमारा। और ये हस्बैंड जो है वो बायोलॉजिकल ई लिमिटेड टेरिटरी में मैनेजर के पद पर है। एडमिटेड है कि 30,000। पढ़िएगा जरा, कहाँ है ये माय लॉर्ड अनेक्सर P4 पेज नंबर 30 में सर ये 3,000 रुपये और 300 का है। और 28 में सर क्या लिखा है? आप तो खुद काम करते हैं ना, आपको तो वेतन प्राप्त होता है। माय लॉर्ड ये 29 में पेज नंबर पे आया है। अभिलेख पर दस्तावेज से स्पष्ट है अनावेदी का उच्च शिक्षित है, परंतु अभिलेख पर कोई ऐसा तथ्य दर्शित नहीं हुआ है। ऊपर लिखा है ना, ये इसका आपका डिनायल है क्या? सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट में अध्यापन कार्य करते हैं। कहना है माय लॉर्ड इसमें सपोर्ट पे कोई भी डॉक्यूमेंट ठीक है, आप एफिडेविट फाइल कर दीजिए कि आप नौकरी नहीं करते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है that parties are required to file affidavit, and if anything is found to be wrong, then
action can be taken, appropriate action can be taken. You file affidavit that you are not working. देखिएगा, petitioner's counsel prays for time to file affidavit of the petitioner that she is not working anywhere and is not having any source of income. Let affidavit be filed within 7 days. List this case on 6 March 2024. Lordship, I'm seeking short adjournment to file additional document, Lordship. अरे तो petition withdraw करके नई petition लगा लीजिए. 24 की तो petition है. Lordship, yeah, this is the petition listed firstly, Lordship. ठीक है ना. The party has given some additional document, Lordship. क्या है issue क्या है पहले देखें तो. Lordship, this is a miscellaneous petition against the order passed by the court below, Lordship. P9 क्या है देखें. Lordship. जी क्या करते हैं आप. Lordship, the petitioner is advocate in taxation profession, Lordship. जी डाइवोर्स की पिटीशन लगाई है आप. Lordship, Lordship. उसमें इन्होंने इंटरिम मेंटेनेंस दी है. Lordship, Lordship, we have preferred the miscellaneous petition against this order, Lordship. So some additional document has been given by the party, Lordship. It is not annexed in this petition, Lordship. So my humble submission, I'm seeking short adjournments of 2 weeks to file the additional document, Lordship. What additional document? Sir, Lordship, issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. चलिए. Number 23. May I please, Your Lordship? Yes. As per the facts of the case, my lords, the present petitioner was appointed as a 4th-class employee by the Shashkiya Mahavidyalaya Harsad on a temporary basis on the post of Karyalaya Sahayak. Okay. Dated, which is Annexure P2, page 17, dated 23/3/2022, my lords. Subsequently, my lords, as per Annexure P4, an RTI was filed by a person named Sohan Uike, which is on page number 25, where he has challenged that my appointment was not as per the guidelines. Subsequently, as per Annexure P7, my lords, which is on page number 29, I was terminated on the basis that, if may I read that? नियुक्त कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, जिसके आधार पर कार्यालय विभागीय अधिकारी राजस्व हर्षद जिला खंडवा द्वारा हर्षद दिनांक 15/7/23 द्वारा शासकीय महाविद्यालय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष महोदय के प्रदेश अनुसार शासकीय जन भागीदारी मत के निम्नलिखित कर्मचारियों को दिनांक 22/7/23 को नियुक्त की जाए. फिर क्या हुआ? My subsequently issue notice to the respondents on payment of CF by registered AD post. I have written the representation as well. 4 weeks. I have wrote a representation as well. So you want representation to be decided or you want notices to be? My representation would do. That is my first. Okay, for representation decided. Representation is annexure? R9. P9. P9. Page 30. Petitioner is aggrieved of the order dated 22/7/2023, whereby Principal Government College Harsud, District Khandwa, has dispensed with the services of the petitioners. Full stop. Against that order, petitioner has filed a representation annexure P9, and it is prayed that it may be directed to be decided. 15 दिन
60 दिन. This court has not expressed any opinion on the merits. चलिए. Highly. Number 34. Well, petitioner who was working on the post of manager, my lord, cooperative bank, and one offence has been registered against him, my lord, in which, my lord, he has been acquitted through Annex P1, my lord, dated 11/10/2021, my lord. During his service, my lord, his amount of gratuity has been withheld by the authority, my lord, on the ground that, my lord, if decision would become, my lord, in his favor, my lord, it would be released. After his acquittal from the competent court, my lord, he has submitted his application before the authority. But, my lord, they had not. Contention is that petitioner was subjected to a criminal proceeding in relation to which RCT number 200087/2005 was instituted in the court of JMFC Niwadi district Tikamgarh. Let's stop. It is submitted that petitioner has been acquitted in the said court case by judgment dated 11/10/2021, acquitting him of the charges under section 420, 419, 468 IPC. Next paragraph. It is submitted that petitioner's gratuity was withheld on the pretext that, as per the outcome of the criminal case, if petitioner is acquitted, then it will be paid. Next paragraph. Petitioner's contention is that despite acquittal, gratuity is not being paid. Petitioner has already made a representation to the Joint Registrar Cooperative Societies, Sagar, to take a decision and pay the held up amount of gratuity. 15 din is then this court has not expressed any opinion on this. My lord, one thing I want to point out, when I was making complaint on CM helpline, my lord, they are making reply that is next P5. और ये इन्होंने ये कहा कि बैंक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उसका परिसमापन. It is made clear that financial condition of the bank cannot be a ground to withhold gratuity of a retired employee. That ground is not sustainable, and therefore the bank is obliged to back, borrow or steal but pay the gratuity of the petitioner within the aforesaid period, if it is admissible in accordance with law. Number 25. May it please your lordship. Your lordship, the present petitioner was selected for the for counselling for the post of contract teacher grade 2. Now, your lordship, kindly see annexure P1. The said counselling was supposed to be conducted on 11/12/2015. 25 number के केस में 27 number के पेज में P2, page number 27. वही मैंने कहा क्या serial number 25. जी. The said counselling was to be conducted on 11/12/2015. जी. Now, your lordship, kindly see annexure P4, page number 29. जी. The said call letter was sent to me, and I received the said call letter a day after the date of counselling, that is on 12/12/2015. And बुलाते हैं ऐसा कि उसमें उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती है. चलिए 15 का है वैसे भी ये. My lord, I am coming to that point, your lordship, as well. My lordship, after that, I preferred a representation in annexure P6 and informed the authorities on 14/12/2015 that I have received the call letter a day after. My lordship, after that, I preferred a petition before this honorable court. Please call notice, issue notice on payment of PF by registered AD post. आज 9 साल बाद ऐसी कोई urgency नहीं है इसमें रुकने के लिए. My lordship, I am coming to that point as well, your lordship. Issue notice कर दीजिएगा. Payment of PF within 7 days, returnable 4 weeks. My lord, I have one more contention. There is one post vacant. Maybe. You have no vested right. My lord. Oblige, your lordship. The second round of litigation of the petitioner before this honorable court, annexure P6, page number 30. The petition pertains to the appointment to the post of Anganwadi Karyakarta, my lord. Page number 34 is the operative part of the previous order. In the present case, pursuant to advertisement dated 9/5/17, the petitioner as well as respondent number 4 submitted the candidature. The record produced by the state reflects that the petitioner, along with her application, submitted a certificate BPL category, and as per the said certificate, the name of the petitioner was mentioned at serial number. इस केस में क्या हुआ? We were found to be meritorious.
in pursuance to which, my lord, the impugn order has been issued, which is challenged in the petition, my lord. That is Whereby the annexure page 39 annexure P8 may kindly be seen, my lord. This is the notice inviting the objection. ये लास्ट पैराग्राफ आता आंगनवाड़ी टाइप कॉपी इज एट पेज 39 आता आंगनवाड़ी केंद्र ढापा तेवरियान क्रमांक कितना इतना आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर जारी अनंतिम सूची प्रकाशन 8/1/2024 प्रकाशित की जा रही है। उक्त अंतिम सूची के विरुद्ध किसी आवेदिका को कोई आपत्ति हो तो दिनांक 8/1/2024 से दिनांक 14/1/2024 तक कार्यालय समय में ठोस साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब they had an opportunity to we have filed an objection. Submit the objection. My objection is to the provisional merit list, my lord. The previous merit list is next to P2, which was upheld by the court in the previous round of litigation. नोटिस सामने वाले को नोटिस करके सुनेंगे। Issue notice to the respondents on payment of PF by the registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. आपने उसको पार्टी नहीं बनाया जिसको अपॉइंटमेंट Respondent number 4, my lord. Respondent number 4, ठीक है। Lord, may I submit, my lord? So next to P2 was the previous list where we were at number 1. The present list which they have published, respondent number 4 has been placed at number 1, my lord. And the BPL marks. My lord, that court, in the previous round of litigation, the court had observed that only there was a lapse regarding procedure not followed by the state government. Regarding merits, my lord, we were found to be meritorious, given 57 marks. Reply आने दीजिए फिर देखेंगे। My lord, she would be appointed to the post of Karyakarta and would be removed from the post. Appointments will be subject to the outcome of this petition. List in the week commencing 22 April 2024. Obliged. Petition number 27. Lordship, this matter is related to termination of the block program manager via order dated 19/1/20. Lordship, kindly see annexure P3 on page number 29. इसके बाद केस मत पुकारिए। Page number 29, Lord. इसको बंद कर देना इसके बाद। Lordship, this is the order of appointment of the petitioner as a block program manager. Now, Lordship, what happened? There was lot of
Yes. Your Lordship, arguing counsel is connected through VCR. कर दीजिए कनेक्ट. क्या मैटर है ये? Lordship, Your Lordship. जी Your Lordship, the बताइएगा. yes, Lordship, may I please, Lordship, the petitioner is agreed by non-computation of his entire length of service, number one, and number two is invalidation of the teacher's code. He is working in the Ayurvedic college, and this Ayurvedic college is regulated by respondent number one, Your Lordship. Lordship, I will take directly to page 36, Your Lordship, and exit P10. जी. Lordship, in exit P10, the petitioner's past service was duly verified by all its previous employers. Lordship would see. Issue is something different. Issue is that you are applying for the post of professor. No, Your Lordship, Are you applying? You are applying for which post? No, Your Lordship, I am already working on the post of lecturer, assistant professor, and by virtue of completion Yes, of you are seeking promotion. no, Your Lordship, by virtue of completion of 5 years, automatically promotion is granted as per their regulation. So there is no separate application required. Okay. Now the problem It is not promotion. It is time scale of pay. Senior scale and selection grade are granted on completion of some time period prescribed in the rules. Yes, yes. So nomenclature changes from assistant professor to associate professor. Yes. The nomenclature may or may not change because the grant of senior scale will entitle you to the pay scale of a associate professor and selection grade to the pay scale of professor. But issue is that what are the requirements for that? Rules में क्या requirement है उसके लिए? Yes, as per regulation, Your Lordship, as per regulation. Where are the rules? Yes. Mr. Khare, where are the rules? Yes, Your Lordship, my associate counsel will provide the rules. Your Lordship, these are regulations. File करिए. सुनिए Mr. Aviral Khare through video conferencing. Rules of the relevant subject are not available on record. Shri Chalotre is trying to pass over them through present in person, trying to pass them over to the bench. Full stop. Let the relevant rules be filed by filing an appropriate application. List this case after rules are brought on record. Your Lordship, just one small submission, Your Lordship. In this case, not only the higher pay grade, my anxiety is, Your Lordship, after validating my entire length of service, they again reopened the case. That is the order which has been issued. पहले आने दीजिए. चलिए next case. Number 9. Rajesh Kumar Pandey. My lord, petitioner retired from service. जी. Regular capacity is seeking for the gratuity and leave encashment. कहाँ है आपका अभ्यावेदन? Annexure P3 है. देखिएगा petitioner's contention is that petitioner attained the age of superannuation from the post of notice server, division number 11, from the office of Municipal Corporation Jabalpur, with effect from 30/4/2023. He has not been paid his gratuity. He has already made a representation to the authorities to pay him the amount of gratuity in lieu of his services. Reliance is placed on a decision of a coordinate bench passed in WP 12305/2013 within bracket S Bachan Singh versus Municipal Corporation Jabalpur and another, whereby the coordinate bench wide order dated 7/2/2014 directed the authorities to compute and pay the amount of gratuity in terms of the provisions contained in the Payment of Gratuity Act 1972 within period of 3 months along with 6% interest from the date of retirement till actual payment. Full stop. Said order shall be applicable mutatis mutandis to the facts and circumstances of the case. Petition is allowed and disposed of. Reverse certificate. CCS per rules. Number 30.
Lordship, petitioners are leaver of respondent department and had rejected the claim by NIJ P19 on incorrect reasons. Lordship, page number 58. क्या claim reject Claims किया? are for granting benimity kan, benefit of benimity kan as per government order NIJ 7-10-16. yes P6. क्या क्या reject कर दिया? इनका कहना है रीजन असाइन किया है पेज नंबर 58 में कि पिटिशनर इज नॉट अगेंस्ट द सैंक्शन बैक एंड पोस्ट. देखिएगा लॉर्डशिप भाई जो P6 में है P6 में ऐसा कहीं जरूरत ही नहीं है भाई. आप देखिएगा petitioner's contention is that petitioners claim to extend benefit of Warehousing and circular Logistics dated Corporation is 7-16. the Warehousing and Logistic Corporation is contesting party in this case. 7-10-16 has not been extended to the petitioner on an inappropriate and incorrect reading of the provisions contained in the policy GAD circular dated 7-10-16 saying that petitioner was not appointed against as a daily wager against a sanctioned vacant post. Full stop. This communication annexure P19 is cryptic and is liable to be set aside. Next para. Issue notice to the respondents on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks, to show that how show that where it is provided in the scheme dated 7-10-2016 that will be applicable only to those persons who were appointed against a sanctioned post. Full stop. Let affidavit of the respondent number 2, managing director of the corporation, be filed in this behalf within the aforesaid period. List in the week commencing 15 April 2024. Not advance copy may be directed to be supplied to the council appearing for the Logistic Corporation. अगर उनके स्टैंडिंग काउंसिल है तो नाम आना चाहिए. सर आप हैं क्या उसमें स्टैंडिंग? नहीं सर मैं नहीं. बस रहने दीजिए सर. नोटिस जाने दीजिए जी. अगर स्टैंडिंग काउंसिल है देन ही शुड अपीयर सर. एंड Number 31. K. Pandey. yes. Lordship, in this case, that the petitioner has been appointed by NJ P1 17/7/2015 as a Aganwadi worker. And after 8 years of service by NJ P4, neither any so-called notice has been issued to the petitioner. And behind the back, inquiry has been conducted and terminated from service. किस ग्राउंड पर P4 में कंप्यूटर तो खुलता नहीं है. ये लिखिएगा there is lot of drag in the computer. It is not supporting the e-hearing in a smooth manner. Registrar IT to furnish explanation that why computer is not functioning, why the e-hearing is not functioning smoothly and why there is so much of time lag in opening of the documents and the petition. हाँ बताइएगा. चलता ही नहीं आपका सिस्टम. क्या करते हैं आप लोग? 31 नंबर खोल रहा हूँ 2 मिनट होगा अभी तक तो केस ही नहीं खुल रहा. फिर कब एनेक्शा देखेंगे, कब डॉक्यूमेंट देखेंगे? इसके पहले भी यही स्थिति है. पेज को आप स्क्रॉल करिए नीचे जाने के लिए, वो अपने आप हैंग हो जाता है. आप लोग तो भारतीय पुरस्कार प्राप्त आईटी सेक्शन है. बाहर मतलब बाहर कोई गलती है क्या? हाँ देखिए उसको, देखिए. Every time I have to seek his help, then he goes back to the e-cause list, then opens the system again, and then the system starts. अगर हर बार यही करना है वो तो मैं भी कर सकता हूँ. तो फिर देखिए और अपनी राइटिंग में रिपोर्ट फर्निश करिए. शाम को रिपोर्ट दीजिए. लिखा रहे रहने दीजिएगा. ये IT registrar appears, Shri Kushwaha appears and submits that he will look into the problem and submit his report in writing. जी, you are referring to P4. जी. NJ P1 by NJ P1 मतलब 7750. हाँ आपका अपॉइंटमेंट हुआ था. ठीक है. Thereafter मतलब they have issued मतलब the NJ P2. जी. On मतलब 6/2/24. इसमें लिखा है ना कि तत्समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के भर्ती समय BPL संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए. पात्रता नहीं थी. रिकॉर्ड बुलवा लेते हैं. लिखिएगा. सर इसमें नोटिस हैज बीन इशूड. ही हैज सबमिटेड रिप्लाई टू दिस शो कॉज माय लॉर्ड एंड देयर आफ्टर. हाँ ठीक है. अब तो रिकॉर्ड बुला रहे हैं. 15-2. ठीक है. लिखिएगा. श्री A.K. Pandey for the petitioner. There is aggrieved of order annexure P4 passed by the project officer Women and Child Development Project Sohagpur.
District Narmadapuram, full stop. It is pointed out that petitioner who was given appointment in the year 2015 as Anganwadi Karyakarta, her services have been dispensed with on the ground that she was not eligible for 10 marks under the BPL category, full stop. Let complete record of the selection be called for by Shri Vivek Sharma, Learned Deputy Advocate General appearing for the state. He may file reply to the petition within 2 weeks. List this case in the week commencing 18 March 2024. Okay. Sir. Serial number 32. No, the petitioner is challenging annexure P2, page number 15, the order dated 15/2/2024 passed by respondent number 4, whereby certain directions have been passed against the petitioner. And the ground on which the petitioner is challenging this order is that, my lord, this order has been passed totally misinterpreting the order passed by this honorable court and writ petition number. Where is that order? That is page 13, annexure P11. Page 14 will be relevant. May I read it? Petitioner's contention is that there is an admission of the Chief Municipal Officer Nagar Parishad Sirmaur, District Rewa, that salary of the petitioner from December 20 to June 21 was paid with a delay of about 23 months on account of delinquency of Shri Ashok Yadav, Assistant Grade 3. This is the petitioner hearing. Yes. And recommended the case to release the petitioner interest at the rate of 12% with a further stipulation to recover the same from Shri Ashok Yadav. As far as the petitioner is concerned, it is evident from annexure P2 that his salary was delayed without there being any fault of the petitioner. Therefore, he is entitled to interest on the delayed payment. Accordingly, it is directed that respondent. ठीक है, क्यों नहीं दिया था आपने 23 महीने तक सैलरी? Well, the relevant portion will be, if I read it later on. Accordingly, it is directed that respondent number 4 will pay the interest at the rate of 9% to the petitioner on the delayed payment of salary and will be free to recover from the delinquent officer for causing delay after giving opportunity of hearing to the said person. So, my lords had not held that the petitioner is guilty for that. Now, the order which has been passed is, my lord, page 15, third paragraph. माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आदेश पारित कर आदेशित किया गया है कि श्री मिश्रा को विलंब से वेतन भुगतान के लिए श्री अशोक चंद यादव सहायक ग्रेड 3 व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। इसलिए श्री अशोक चंद यादव से 9% ब्याज की दर से आदेश पारित होने से दिनांक से 1 माह के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में माह दिसंबर 20 से जून 21 तक कुल 23 माह के विलंब से की गई वेतन भुगतान 9% की राशि श्री दयाराम मिश्रा, सेवानिवृत्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद सिरमौर के पक्ष में 10 दिवस के अंदर भुगतान किया जाना सुनिश्चित कर पालन प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ठीक है। Issue notice to the respondents on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. And my submission is no opportunity to hearing has been provided. ठीक है, देखेंगे ना। This order may be stayed. नहीं। चलिए, next case. The language of this order is language guilty for that. Language is also faulty. क्योंकि वो दिसंबर 20 से जून 21 तो 23 महीने होते ही नहीं है। नहीं, उसका पेमेंट 23 महीने डिले से हुआ, ये कह रहे हैं। हाँ, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे डायरेक्टली पेमेंट करने के लिए कहा है उस पेटिशनर के अकाउंट में, जबकि ऐसे कोई डायरेक्शंस ही नहीं। चलिए ठीक है, तो आप इंटरेस्ट की जो है देखते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं, जवाब आने दीजिए, देखेंगे। चलिए नेक्स्ट केस। नहीं। Otherwise, I will be. आपने 23 महीने तनख्वाह क्यों नहीं दी, ये बात तो आई है, इसमें आपका नाम आया है ऑर्डर में, आपके कमिश्नर ने कहा है यहाँ पर आपने मुझे होल्ड नहीं किया है। हाँ ठीक है, मैंने होल्ड नहीं किया है, दैट इज करेक्ट। चलिए, उनकी लैंग्वेज आपने ये भी कहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाए। ठीक है, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग इन द मेल बिफोर फाइलिंग रिप्लाई रिस्पोंडेंट्स विल बी एंटाइटल्ड टू अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द पिटिशनर एंड कॉल फॉर हिज एक्सप्लेनेशन। चलिए, Serial number 33. May it please your lordship. My lord, the challenge in the petition is the impugn order at annexure P1. It's a suspension order, which my lords would find at page number 19. Now, the suspension order is challenged on 2 grounds. One, that there is no reason for passing of the order. And second, my lord, I have been made an scapegoat for one of the proceedings which was pending before this court, where very specific directions were issued. My lords may just come to page 19, my lord. Page 19, yes. Annexure P1. And also, my lords may see, I'll read the entire order, my lord. पढ़िए। जी, मैं पहला पैराग्राफ छोड़ के जो ऑपरेटिव पार्ट है दूसरे से पढ़।
न्यायालयीन प्रकरणों में डॉक्टर अंसारी द्वारा शासन का पक्ष जवाब दावा समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने की अवमानना की स्थिति निर्मित हुई है एवं डॉक्टर अंसारी द्वारा न्यायालयीन प्रकरणों में शासन से समय समय पर परामर्श नहीं लिया गया, जिससे शासन की छवि धूमिल हुई है। माननीय उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न प्रकरणों के अत्यंत स्थिति की कोई मॉनिटरिंग नहीं की गई, जो डॉक्टर अंसारी की लापरवाही को दर्शाता है। अतः डॉक्टर ओबेद अहमद अंसारी विशेषज्ञ आयुर्वेद अधिकारी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 का उल्लंघन किए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन सुवंशु। फर्स्ट थिंग, Rule 9 empowers an authority to pass an order of suspension. Rule 9, there cannot be a violation of Rule 9. Yes. That's one thing. बताइएगा रूल 9 का वायलेशन से सस्पेंशन कब से होने लगा? आपके उप सचिव ने किया है आदेश, संजय कुमार मिश्र। And ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा समझ तो लें सर। रूल 9 के वायलेशन में सस्पेंशन कब से होने लगा? अरे भाई वो अपील तो बाद में आएंगे, पहले तो ये बताइएगा आपके अधिकारी क्या समझते हैं कानून के बारे में। नियम 9 का कौन सा उल्लंघन होता है जी? आपके जब अधिकारी उप सचिव स्तर के अधिकारी भारत मध्य प्रदेश शासन के इतना नहीं जानते, किताब नहीं खोलना चाहते क्या? तकलीफ होती है किताब खोलने में कि लीगल एडवाइस सही नहीं देते आप लोग इनको। देखिएगा इस ऑर्डर को आई एम स्टेइंग, जब आप फाइल करिएगा। पिटिशनर इज एग्रीव्ड ऑफ ऑर्डर डेटेड 15/2/2024 passed by the state government under the authority of the and in the name by the order of and in the name of the governor by the deputy secretary Madhya Pradesh government Ayush department, namely Sanjay Kumar Mishra, placing the petitioner under suspension on account of alleged violation of Rule 9 of the CCA Rules 1966. Full stop. It is submitted that Rule 9 authorizes an authority competent in that behalf to place a government servant under suspension. Violation of Rule 9 is not a ground to place an employee under suspension. Therefore, impugned order is hereby quash ही कर देते, इसको वापस भेज देते हैं आपको, is hereby quashed. Matter is sent back to the principal secretary of the department to apply his/her mind to the factual situation and pass appropriate orders in accordance with law. Full stop. Let Sanjay Kumar Mishra, who dealt with the file and passed the order, be stopped from dealing with the file as prima facie he has no application of mind while passing. He had not applied his mind while passing order in except even. Chali. Grateful. Number 34. In this petition, petitioner seeking benefit of the first commonality. जी फर्स्ट commonality benefits मतलब कब से चाहिए आपको? ये मतलब 96 के बाद मतलब जी किस पद पर काम करते हैं आप? मतलब फर्स्टली आप वी अपॉइंटेड 87 हेडमास्टर हैं आप, रिटायर्ड? यस मतलब जी become headmaster on 6/7 petitioner's contention is that petitioner became headmaster on 6/7/1996 by annexure P2. He attained age of superannuation कब प्राप्त की इन्होंने? ये मतलब 26/6/2013. Therefore, having put more than annexure P3. Therefore, having put more than 17 years of service on the same post, that is of headmaster, he had become entitled to grant of Kramonatti / time scale of pay, but that has not been given to the petitioner. Full stop. Petitioner has representation दिया क्या आपने? yes representative pending P5 has made a representation annexure P5 to the principal of the school. Full stop. It is directed that petitioner will file a fresh representation to the district education officer of the concerned district from where petitioner attained age of superannuation, that is Chhindwara, within 30 days from today, and district education officer shall pass orders on the said representation and decide the representation through a speaking order within further period of 30 days. In above terms, petition is dismissed. मतलब इसमें respondent number 2 जी respondent number 2 को represent कमिश्नर
ट्राइबल वेलफेयर। नहीं, assistant commissioner, he has made a डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जगह number 4. रिस्पॉन्डेंट नंबर Page 24. रिस्पॉन्डेंट नंबर 4 कर दीजिएगा। विल मेक अ फ्रेश रिप्रेजेंटेशन रिस्पॉन्डेंट नंबर 4, ठीक है ना? असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर छिंदवाड़ा, सर्टिफिकेट कॉपी पीसीएस फॉर रूल्स। Case number 35. In terms of order, last order 28/11/2023, I have amended the petition and filed the amended copy of the petition. देखिएगा, petitioner has filed amended copy of the petition on किस तारीख को किया आपने? Sir, that is on. Sir, that is on 12/12/2023. 12/12/2023. State may file reply to the amended petition within 4 weeks list thereafter. IR to continue. IR किस चीज का है? Sir, recovery pasting. हाँ, IR to continue. Much obliged. Case number 33. Reply is awaited in this. लिखिएगा, श्री SK Malvi. SK Malvi. Malvi, learned counsel for the petitioner. Reply of the state is awaited. As per last to last order, the employee selection board has to file the reply. हाँ तो ठीक है, वो पार्टी नहीं है क्या? पार्टी है। उनको amendment करके बना ये बैंक बना लिया ना? तो आप किसके लिए आ रहे हैं? बस ठीक। एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के लिए कौन है? I am appearing. हाँ, मतलब if although we'll file our reply, my lord, but if my lord, my direct my lord, we'll demonstrate from the petition, my lord, that it is, my lord, there is a basic, my lord, at page 73, if my lord would just have 73. मतलब याचिकाकर्ता का केस है कि 76.56 जो इनके मार्क्स है उनको सिलेक्ट कर लिया है और इनके 93.72 मार्क्स है उनको सिलेक्ट नहीं किया है। इनके 79 है, पर जो इनके 76.56 जो है सर, वो सर्विस एक सर्विसमैन कैटेगरी वाले हैं सर, और ये अनरिजर्व, ये ओपन कैटेगरी वाले। पेज 73। हाँ तो SC अनरिजर्व, ये देखिए SC ओपन, पेज 73। कहने का nobody lower than petitioner has been given granted. देख लेते हैं एक बार। उनका तेज करवा। Page 73, yes. The last लिखेंगे सर, अगर एकदम लास्ट तो राजेंद्र सिंह जाटव, वो SC, इनका 76.56 है, इन्हीं से क्लेम कर रहे हैं कि इनको सिलेक्ट कर लिया है। आप किस कैटेगरी में है? SC में है। आप भी SC में? 13 देखिए, 13 पे। हाँ, एक सेकंड 1789 76.56 ये है सर SC एक्स सर्विसमैन। हाँ, मालूम पड़ेगा एक्स सर्विसमैन सर लास्ट अच्छा, S लिखा हुआ है, SC एक्स सर्विसमैन है। और सर SC फीमेल जो ओपन है उनका सर ऊपर है 1766 1766 सर, SC फीमेल ओपन सर। हाँ, इनका कट ऑफ 93.72। ये इस कैटेगरी के हैं सर पिटिशनर। बताइएगा प्लीज, आपको एक्स सर्विसमैन में कैसे मिल जाएगा? आप एक्स सर्विसमैन भी हैं क्या? नो। तो फिर खत्म हो गई पिटीशन यहीं पर। लिखिएगा श्री। My merit is that कि I am working as guest teacher since तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उसका तो कोटा ही अलग था ना, गेस्ट टीचर का तो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का कोटा। हाँ सर, उनको बोनस अंक मिलने हैं गेस्ट टीचर्स को। सरकार देना था सरकार को बोनस। तो सरकार ने बोनस अंक दिए नहीं दिए? given or not, it is not clear in this. वो बताएंगे, लिखिएगा सर। जो सरकार जवाब फाइल करेगी, लिखिएगा as far as petitioners claim that a less meritorious person whose name appears at serial number 1789 in annexure P3, namely Rajendra Singh Jatav, is concerned that he had secured 76.56 marks and petitioner too had secured similar marks. Therefore, she should also have been given appointment is not made out because Rajendra Singh Jatav was under ex-serviceman category, SC ex-serviceman category. That is, vertical reservation was under SC category and horizontal reservation under ex-serviceman category. Whereas petitioner was under the SC female category, for which
The last selected candidate is Pooja Dhanak, whose name appears at serial number 1766 and who had secured 93.72 marks. Next para. At this stage, Shri Malvi submits that petitioner was working as a contract teacher and therefore state is required to show whether they have granted marks for contract teacher experience or not. Full stop. Let reply be filed by Shri B.D. Singh, London Deputy Advocate General for the state within 10 days. List on 12 मार्च 2024. क्या हो गया? और मैं बता रहा था रिप्रेजेंटेशन में ये बात नहीं कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इनको तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं, अब हमने पूछ लिया ना, स्पेसिफिक टर्म्स में पूछ लिया. लेट कंप्लीट जस्टिस. हाँ हाँ हाँ, यू ऑलवेज स्टैंड फॉर कंप्लीट जस्टिस. Number 37. Chief, I filed an application for amendment in the petition yesterday only. देखिएगा, petitioner submits that he has filed some application for amendment in the petition. Same is not on record. List this case along with the application. आपका शुभ नाम बताइए. मयंक सिंह. श्री मयंक सिंह करके. May it please, Your Lordship. My Lord, the challenge in the petition is annexure P1 at page 24, wherein the Commissioner, Urban Administration and Development Department has directed for registration of an FIR against the petitioner and other persons regarding the alleged irregularity committed in the absorption of various employees in the municipal council, newly constituted municipal council in district Anuppur, my Lord. The entire genesis of the order revolves around two aspects. One, that because the illegal absorption was there, therefore a total payment of roughly around 2.4 crores was paid. And subsequently, these people, the persons who were mentioned in the impugned order were held responsible. My Lord, the order is challenged under two aspects. One, my Lord, the Commissioner does not have an authority to direct for registration of an FIR because it's an independent proceeding. If a complaint is filed, my Lord, then the criminal proceedings start and the FIR is registered. Second, my Lord, Commissioner is not entitled to direct for lodging of FIR even if the loss is caused to the department on the act of on the basis of your criminal acts. Is this your argument? No. Well, I'll have to note that. No, my Lord, I'm substantiating that argument. Now, my Lord, the amount which is mentioned of 2.4 crores, which is a payment. You're not concerned with it. It's a matter of investigation. No, my Lord. Whether it is 2.4 crore rupees or 24 No, I'm rupees. coming to that. My Lord, the writ petition was filed wherein a non-payment of salary was one of the issues where the Honorable Court has allowed the writ petition directing the authority. May have and allowed. Also, my Lord, the departmental inquiry against the petitioner is There already are two independent remedies. If you committed fraud in regularizing or absorbing certain employees who were not entitled, then that fraud can always be investigated at two different levels. My Lord, that order has also been caused of termination by your lordships also. होगा. और एक चीज और मैं बता दूं. That will not save you. My Lord, एक चीज और बता दूं. The entire incident was of 2021, my Lord, and they relied on a report which my Lords may see at page number 24. It is dated 22/12/2000. जवाब मंगाते हैं. Issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 7 days returnable for week. In two cases, my Lord, there has been already an interim order. दिखाइएगा. सुप्रीम कोर्ट तो मना करता है ऐसे FIR स्टे करने के लिए नो कोर्सिव ऑर्डर्स के. एक सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा जिसमें कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली, my Lord. That observation. इसको फिर उसी बेंच पे लगवा देते हैं इसको. इसको बढ़वा देते हैं because this is against the law laid down by Supreme Court. In fact, my Lord, yes, there is another. And interim order का कोई presidential value नहीं होते. It is not a president. चलिए next case. My Lord, there is one more Supreme Court judgment. हाँ ठीक है देखेंगे. My Lord, this parity may be हम maintained. नोटिस आने दीजिए फिर देखेंगे. My Lord, can a returnable be? हाँ returnable in the week commencing 22 अप्रैल 2024. चलिए. Then in fact, my Lord, your lordships have only quashed the termination order directing the authorities to investigate. हाँ ठीक है. Let them investigate. Number 39. May it please your lordship. My lord, in fact, way back in 1995,
a policy was taken by the state government, then insofar as the non-governmental institutions are concerned and that lecturers, others are functioning, my lord, they need to be absorbed, my lord. That scheme is very much on record. Now, on the basis of the policy of the state government of 26/1995, the absorption process, my lord, started off. Insofar as P4 is concerned, my lord, my name appears at serial number, my lords. It's very much on record, my lord. If I can straight away take my lords at P4, page 40. Yes. Now, that is Shivendra Tripathi. My name is very much there for screening, right, my lords? Now, Serial number? at that is at 10. And 10, I think so. Yes. 10 तो हमने तो Shivendra Kumar. शिवेंद्र त्रिपाठी 9 Nine. number. Right, 9. Right, my lords? जी. Now, that being the position, my lord, regarding this, what was taking place, my lord, certain matters were taken up to the Supreme Court. Supreme Court dismissed insofar as the policy was concerned. Now, let's skip on that. And then there was on P9 at page 58, committee comes to be constituted in accordance with the policy, my lord, regarding for absorption. P5 at page 58. Yes. Right, my lords? Now, insofar as I'm concerned, my name finds place, my lords. जी. In the, that is 56, my lord, is the relevant page. 58 is the relevant page. नहीं, वो तो वैकेंसी का नहीं था तो नहीं किया. हाँ हाँ. That was the thing. ठीक है, जवाब बुलाते हैं हाँ, नहीं तो issue notice on payment of PF per registered daily post within 7 days, returnable 4 weeks. obliged please. Number 40. मैंने रिप्लाई फाइल करना है, अभी कॉपी रिसीव नहीं हुई है। काय की कॉपी रिसीव नहीं हुई? मैं इनको 4 बार सर्व करा चुका हूँ एक्चुअली। आपके पास पावती है? पावती नहीं, नोटिस के साथ भेजा है हमने। अच्छा, एक कॉपी और दे दीजिए। लिखिएगा श्री विकेश प्रताप सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, दैट कॉपी ऑफ द पिटिशन अलोंग विद एनक्लोजर्स बी सप्लाइड टू, आपका शुभ नाम बताइए मैडम? पूनम नामदेव। मिस पूनम नामदेव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे. Today, आज ही मैं after obtaining acknowledgement on this copy, so supplied to Miss Poonam Namdev. She may file reply within 10 days, list immediately thereafter. 4 weeks कर देगी। 10 दिन बहुत है, पर्याप्त समय. नहीं तो मुझे नोट करना पड़ेगा, इंक्वायरी ऑर्डर करनी पड़ेगी कि कॉपियां जो गई थी हाई कोर्ट से वो कहाँ चली गई, और आपकी मंशा लिखनी पड़ेगी कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन कोऑपरेटिंग विद द कोर्ट एंड यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन सीकिंग टाइम. ये सब लिखना चाहती हैं आप तो आपको 4 हफ्ते का टाइम दे देता हूँ इंक्वायरी कराकर. जी ठीक है, जाइए. Kindly be pleased, my lord. My lord, there is an order dated 27th of February 2019. जी. After this order of Honorable Court, the reply was submitted. So 27th February 2019. जी, क्या है ऑर्डर पढ़िएगा. My lord, Sri S.D. Shukla, learned counsel for the petitioner, Miss Sonali Srivastava, learned panel lawyer for the state, despite us giving last opportunity on more than one occasion, no reply has been filed. फिर क्या वो रिप्लाई आया अभी नहीं? Yes, मतलब इसके बाद इन्होंने पैसा जमा किया कि नहीं किया, पर रिप्लाई दी, and they have justified their denial of this, my lord, मीशा बंदी पेंशन. हाँ बताइए. ये 94 साल के हैं और इनका जो सस्पेंशन था P1 itself reveals, my lord, that 5/4/1976 से 22/5/1977 तक सेवा से निलंबित रहे. और जो एक सेकंड, मीसा बंदी के लिए क्या प्रावधान है? वेयर इज द स्कीम? Yes, my lord. They have taken, my lord, the इसमें आपको 1 दिन के जेल दिखाना है मीसा बंदी को कि इस दौरान आप 1 दिन you were under custody and therefore you will become entitled to the pension meant for मीसा बंदी. Yes, ma'am. ठीक है, यही पॉलिसी है ना? Yes, ma'am. कहाँ है वो आपका जेल में बंद होने का सर्टिफिकेट? ग्रेटफुल, my lord. ये जो 2 लोगों के एफिडेविट इनके रिटर्न पे आ जाते हैं. नहीं, एफिडेविट पे मत जाइए, हमें तो वो जेल का कागज दिखा दीजिए जिस जेल में आप निरुद्ध रहे. My lord. सस्पेंशन को डोंट ट्राई टू मेक अ कैपिटल आउट ऑफ योर सस्पेंशन. My lord.
मतलब इसमें 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो ये है कि या तो वो जेल का रजिस्टर मिल जाए जो इनको नहीं मिला, फिर दूसरा है कि आपके साथ जो निरुद्ध रहे हों ऐसे 2 व्यक्तियों का एफिडेविट दे दीजिए। तो एक काम करिए ना, वो लोग जो इन्होंने एफिडेविट दिया है वो निरुद्ध रहे उस जेल में कब से कब तक, उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। मतलब अब ये तो सरकार नहीं, सरकार नहीं, ये जितना चल दे आर गेटिंग दे मे बी गेटिंग वो कब से कब तक निरुद्ध रहे उससे मालूम पड़ जाएगा, डेट्स कोरिलेट हो जाएंगी। यस ठीक है, वो डेट्स ले आइए कि वो कब से कब तक बंद थे। मतलब नहीं, इनसे नहीं, पेंशन आपको चाहिए, मेहनत आप करिए। 94 क्या कर सकते हैं, वकील साहब तो जवान हैं अभी। आई विल बस ठीक है, लिखिएगा श्री राज बहुरन सिंह। आपका नाम नहीं है ना इसमें? आप यस मतलब सब्सिक्वेंटली मेरे पास आई एफजी में खड़े हो रहे हैं। मेरे पास है for the petitioner prays for time to bring on record certificate of showing detention of the persons who has sworn affidavit in favor of petitioner's detention. Let certificate of their detention be brought on record. कितने समय में लाएंगे? 10 दिन में लाएं। हाँ. Any date? Foreign is granted 2 weeks time to do the needful. List after 2 weeks. Any date may be given because date बिल्कुल fix date लीजिए आप. Grateful. लिस्ट ऑन 19 मार्च 2024। ग्रेट। नंबर 42 we have challenged annexer P8 lordship, page number 52 lordship. The period of from termination till restatement lordship, that same period was treated as dishonorable by the department lordship. अच्छा. What had happened lordship? The petitioner was working on the post of June lordship. Thereafter दीक्षित साहब, आपका एंगेजमेंट हो गया इस केस में एज ए सीनियर? कैसे खड़े होंगे आप? कैसे खड़े होंगे जब तक कि इंस्ट्रक्टिंग काउंसिल LIC के पैनल पे नहीं आएगा? How can he instruct you to appear in this case for LIC? एक गाउन इतना आसान नहीं, बड़े कांटों का ताज है ये। with me. नहीं, is he impaneled on LIC? Is he impaneled with LIC? है? ठीक है, फिर चलिए मैं लिखाऊंगा उसमें कि he is impaneled with LIC. Yes, चलिए। हाँ, शुरू करिए। P8. Petitioner was working on the post of June lordship. After departmental inquiry, service of the petitioner has been terminated on 30/10/2002 है आप। अच्छा। Against termination lordship, the petition has been filed before this honorable court lordship. In the petition of the petitioner as per annexer P1 lordship, the petition has been allowed, and the petitioner was restated without back basis. ठीक है। But thereafter lordship, the respondent department lordship filed as civil appeal lordship before the Supreme Court lordship. The same appeal has been dismissed. Thereafter lordship, as per annexer P2 lordship. Thereafter lordship, I have been restated as per annexer P4 lordship. Page number 46. After restatement lordship, the department has passed an order as per annexer P8 lordship, page number 52. As per this impugn order lordship, the period of the termination till restatement lordship, that period has been declared by the respondent lordship as died non. इसकी क्या इंक्वायरी हुई? एक मिनट रुक जाइए। Where is the inquiry before declaring that period to be dies non? Knowing, because रुक तो जाइए तिवारी जी। in the rules of the corporation, बताइएगा कहाँ it is not a punishment. नहीं, ठीक है, it may not be a punishment, but you must have conducted some inquiry to declare his period as dies non. What is the meaning of dies non and what is the procedure? He was not on duty throughout. नहीं, he was not on duty because he was terminated. Then once he has been reinstated by the order annexure P1,
The LIC visited to the Supreme Court. नहीं, you may go to stay. International Court of Justice. Supreme Court granted the stay. नहीं, And उससे thereafter the decision, the petition was decided. dismissed, it was dismissed, ऐसा कहाँ लिखा है? पूरी फाइल लेकर आइए जिसमें कि ये डाइजॉन का डील किया गया है. Where is the original record? देखिएगा, श्री Yogesh Mohan Tiwari for the petitioner. Petitioner is aggrieved of the order annexure P8, whereby his period of service from 1/11/2000 to 29/10/2014 has been declared as Daisnon. Next paragraph. Petitioner's contention is that petitioner was removed from service by order dated 30 October 2000. Full stop. He had filed WPS 542/2004. Full stop. This writ of petition was allowed by पूरा ऑर्डर भी नहीं लगाया आपने. पूरा ऑर्डर लगा. कहाँ, किस पेज पे कंक्लूडिंग पैराग्राफ पढ़ना है? 29 के बाद में 32 आया सीधे. कंप्यूटर से देखिए, आपने लगाया है तो इसमें स्कैन नहीं हुआ. एट दिस स्टेज इट अपीयर्स दैट हाई कोर्ट कंप्यूटर सेक्शन हैज नॉट स्कैन्ड पेजेस 30 and 31, and after page 29, page 32 has been scanned. There is a error apparent on face of record. Full stop. For the mistake of the IT section in not scanning the document incomplete, comma, inconvenience is caused to the court. Full stop. It is directed that an officer be deputed by the Registrar General to certify that the documents which have been scanned are scanned in toto from the physical file, so that inconvenience is not caused to the court. Full stop. Let orders in this behalf be issued, certifying that the scanning is complete in all respects and complete document is available on the e-file. Unless that certificate is issued, case should not be listed before the bench. Full stop. Next paragraph. Since this court is handicapped because of incomplete scanning of the documents, comma, आपके केस में खुल रहा है क्या पेज 29 के बाद में 30-31 चेक करिए. Shri Dikshit is directed, Shri Dikshit, learned senior advocate, assisted by Shri Anshul Dikshit, who submits that he is a enrolled panel lawyer on the panel of LIC. खुल रहा है आपके पास 29 के बाद, पेज नंबर 29 के बाद. Is directed to call for the original record in which case of the petitioner was dealt with, declaring his intervening period as dies on. List this case. कहाँ से आना है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड आना है सर शेड्यूल से. शेड्यूल List this case on in the week commencing 11 मार्च 2024. नहीं है ना, सही लिखा है ना, ठीक है. 11 मार्च को 20 वाले 18-19 वाले वीक में दे दो. 18, चलिए 18 वाले वीक में कर दीजिए. 18 वीक कमेंसिंग 18 मार्च. 11th वाला टाइम है. कभी कभी 11th वाला टाइम में राइट है. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. 18 मार्च. Number 43. Copy of the order be sent to the Registrar General to do the needful. Challenges to the annexure P1 wherein my lord for a period of 64 days my leave has been sanctioned as leave without pay, my lord. That is annexure P1 from 9/4/2010 to 11/6/2010. Now, my lord, what had happened, my lord, by the annexure P2, I was transferred from Chorata Riva to SC Suni to Lakhnadown. कब ट्रांसफर हुआ आपका? 20/10/2009 को annexure P2 से. 20/10/2009 annexure P2. Now, on the same day, my lord, जी. I was transferred by the chief engineer from Chorata to Simaria Riva. मतलब नहीं समझ में आया. इसमें कहाँ ट्रांसफर हुआ था आपका P1 से? P1 से हुआ था चौराटा से लखनादौन.
नहीं, डिस्ट्रिक्ट सीनी। ये तो लिखा हुआ है अतिरिक्त सचिव इतना इतना। कहाँ है वो ऑर्डर? एनेक्शन एनेक्शर P2। P2 PD Shukla, Assistant Engineer, Riva is hereby transferred in the same capacity and his services are placed under the administrative control of SIVNI. Suni. जी, The place was Lucknow, my lord. What? That comes under district Suni. ठीक है। आपका ट्रांसफर हुआ चौरहटा से सिवनी जी। And on the same day, my lord, I was transferred Annexure P3 from Chorhata to Simaria, Riva. एक सेकंड रुक जाइए। डेटेड 20/10/2009 और P3 से कहाँ ट्रांसफर कर दिया आपको? चौराटा से सिमरिया। चौराटा से सिमरिया। My name appears as serial number 2. P3 एक सेकंड। Now, my lord, what had happened? सिमरिया। My relieving order is Annexure P4 एक from सेकंड। P3 डेटेड 20/10/2009 जी। फिर Now, my lord, since there was a confusion, my lord, as to where I have to go, my lord, a relieving order was issued on Annexure P4 on 8/4/2010. Who has relieved you? My lord, it was my lord Simaria. नहीं सिमरिया। Assistant Engineer Simaria. अरे आप तो चौराटा में अटैच थे ना। चौराटा से कब रिलीव हुए? आप P1 के मुताबिक P2 के मुताबिक आप चौराटा में थे, जहां से आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने मैनेजिंग डायरेक्टर के निर्देश पर सिवनी ट्रांसफर किया और चीफ इंजीनियर ने आपको सिमरिया ट्रांसफर किया P3 से। Yes. तो थे तो आप चौराटा में। चौराटा से कब रिलीव हुए? चौराटा से सर Annexure P4। P4 चौराटा से नहीं है, पढ़िएगा इसको जरा फिर से। सिमरिया से है, इसीलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। चौराटा से कब रिलीव हुए आप? Since you were attached to Chorata, your relieving will be from Chorata, and that is the material date. My lord, may kindly come to page 17, my lord. 17 annexure. That is not an annexure, my lord. Eh? That is not an annexure. That is a part of page 17, my lord. Page 17 of what? A petition, my lord. Petition का तो पेज 14 तक ही है petition आपकी। 17 पेज पे है ही नहीं petition। 15 पे तो annexure आ गया। नहीं, it's a document, my lord. Annexure at page number 70. हम 17? 17 तो annexure ही तो पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज नंबरिंग अलग हो गई है। Oh, I'm या sorry. तो आप कंप्यूटर से बहस करिए। Annexure P5, my lord. P5, yes. पेज 16 है। पेज 16 के बाद 17 पे जी। क्या लिखा 17 में? इसमें इन्होंने लिख दिया कि I have joined at Dhanora Distribution Center on 14/6/2010. 10 जी। धनोरा मतलब आपका तो ट्रांसफर सिमरिया हुआ था ना, सिवनी हुआ था। धनोरा कहाँ पहुंच गए आप? वही तो सब पूरा कंफ्यूजन हुआ है। नहीं, पूरा कंफ्यूजन नहीं हुआ। पहले आप तो हमें ये बताइए चौराटा से आप कब रिलीव हुए? बिकॉज इट इज अनडिस्प्यूटेड दैट यू वर पोस्टेड एट चौराटा, फ्रॉम वेयर देयर 2 ट्रांसफर ऑर्डर्स वर इशूड, one to Sivni and another to Simaria. So you are required to show that when were you relieved from Chorata and for which place you were relieved. That will My lord, may come to Annexure P6 page 18, my lord. जी। It says, my lord, she is so and so attached to Dhanora Distribution Center at O&M Division Lucknow is hereby transferred in the same capacity and posted under the administrative service. वो बात का डेवलपमेंट है। अभी हम 2009 की बात कर रहे हैं। आपके 2 स्थानांतरण आदेश हुए 20/10/2009 को। 20/10/2009 को ये आदेश पारित होने के बाद आप चरोटा से कहाँ रिलीव हुए? अगर आपको नहीं मालूम है तो ये बताएंगे। That document is not on record, my lord. You are required to bring that on record, because that will be the determining factor as to whether he was unauthorizedly absent or not. I'll file that. हाँ लिखिएगा। श्री Rajneesh Gupta, after submitting that there were 2 transfer orders issued on the same date by 2 different authorities, namely Annexure P2 dated 20/10/2009, transferring petitioner from Chorhata to Sivni, and another order Annexure P3 of the same date, transferring him from Chorhata to Simaria district Riva,
comma, and then taking this court through Annexure P4, which is the relieving order from Simaria, dated 8/4/2010, comma, the issue is that to determine the actual controversy, whereby period between 9/4/2010 to 11/6/2010 has been declared to be leave without pay, that as to when petitioner was relieved from Chorhata, full stop. Shri Rajneesh Gupta is not in a position to bring that document on record. Let said document be brought on record by the council appearing for the electricity board. Full stop. Shri Khandekar prays for and is granted. कितने समय में ले आएंगे? 1 week. 7 days time to do the needful list after 7 days. Not in week commencing 11 because in the week commencing 5th, my lord, I am adjusted. हाँ ठीक है, उसके बाद आ जाएगा. List in the week commencing 1 अप्रैल 2024. I am online. Serial number 44. लॉर्डशिप अर्लियर हमारे द्वारा रेगुलराइजेशन के लिए पिटीशन लगाई गई थी. पेज नंबर 13 में ऑर्डर हुआ था, डायरेक्शन हुआ था. डायरेक्शन के बाद लॉर्डशिप हमें रेगुलराइज नहीं किया गया. 2019 में हम रिटायर हो गए लॉर्डशिप. और पेज नंबर 19 में लॉर्डशिप सेम सिमिलर ऑर्डर हुआ था WP में, उन्हें रेगुलराइज कर दिया लॉर्डशिप. पेज नंबर 19 लॉर्डशिप. एनेक्सर P3 लॉर्डशिप. रज्जू डहेरिया. जी बताइए. Who is appearing for the municipal council? हाँ बताइए. Why this discrimination? आप तो प्री सिटिंग में भी नहीं आते लोक अदालत की. आपके केसेस लगते हैं लिस्ट में, आप आते नहीं है. अरे whatever. I had come alone. That matter is disposed of. कल भी लगा था आपका केस, कल भी नहीं आए आप. I don't know. कितने 3-4 हैं क्या यहाँ पर आपके नाम के लोग? हो सकता है. हैं? हो सकता है कि है. शायद हैं एक दो तो. सभी बीमा कंपनी पर हैं. I am not appearing for insurance. You are not appearing for insurance company. कोई दूसरे सिद्धार्थ शुक्ला है वो. अच्छा ठीक है, चलिए. पर वो रिजर्व पोस्ट में थे रज्जू डहेरिया. अच्छा. SC. तो आपके यहाँ पोस्टों की क्या पोजीशन है? जनरल कैटेगरी के लिए कोई पोस्ट नहीं है क्या? That was only, at that time only one post was vacant. Now what is the vacancy position? For that 2019 में इनके रिटायर होने के पहले क्या वैकेंसी पोजीशन थी? रिकॉर्ड पे लाइए. Respondent counsel is directed to bring on record complete vacancy position as was obtaining in the, किस पद पर थे आप? लाइनमैन लॉर्डशिप. As was obtaining in the cadre of linemen prior to date of renewation of the petitioner in the year 2019. Let needful be done by the council for the municipal council Sivni within कितने दिन में ले आएंगे? 2 weeks. In the meanwhile, copy of the rejoinder be supplied to the respondent who may file additional return if so required within the aforesaid period. Serial number 55. This is a case wherein the petitioner was engaged as a daily rated employee, my lord. 2 हफ्ते. As a daily rated employee in the year 2010. जी. Now, my lord, he is still serving, my lord, because of the interim order so granted by this honorable court, my lord, and therefore the petitioner is seeking a direction or consideration of his case as per the policy dated 7/10/2016. देखिएगा, petitioner's only case is that since he is working with effect from 2010, is 2010. 2010. हाँ, तो how this policy will be applicable? My lord, may kindly see, my lord. पढ़िएगा, policy पढ़िएगा. 1.8. I have also filed that is and it's a P6. P6 पढ़िएगा जरा प्लीज. 1.8. ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई 2007 को कार्यरत थे वे दिनांक 1 सितंबर 2016 को भी कार्यरत थे. इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे. दिनांक 16 मई 2007 के पश्चात शासन की अनुमति अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किए गए उन्हें भी योजना की पात्रता होगी. Now, my lord, is only what case is now? that petitioner's case for extension of benefit of GD circular dated 7/10/2016 has not been considered by the authorities. 15 दिन 60 दिन this court has not expressed any opinion on the merits. Interim order to continue, my lord, because my lord, petition ही dispose of कर दी. चलिए next case. They would terminate, my lord. ठीक है, क्या कर सकते हैं?
serial number 46, Shri VK उपाध्याय. देखो टर्मिनेट क्या कर सकते हैं भाई? interim order to at least for consideration. हाँ, IR to continue for that period of 60 days till consideration is made. Yes. चलिए. The mother of the petitioner was working as the ANC in the department, my lord. जी, she was working as ANC, my lord. ANM. ANM. Lord. In a community health center, my lord, Shivpur, my lord, district Hoshangabad. She dies due to harness on 13/4/2003, my lord. In which year? Lordship. कब डेथ हुई उनकी? 13/4/2003. 13/4/2003 जी. At that time, my lord, the petitioner was minor, my lord. कितनी उम्र थी उसकी? इसकी सर his date of birth was 39/92. हैं? 11 साल उम्र थी. डेट क्या बताई आपने? 13/9/92. 92, 11 साल का था. Lordship. जी. Thereafter, my lord, in the year 99 में मेजर हो गया वो. ठीक है? सर ये 99 में मेजर हो गया. 2010 में सर. क्यों? जब 11 साल की 99 में थी. नहीं, डेथ के टाइम. सॉरी, आई एम सॉरी. हाँ, 2010 में मेजर हो गया. 10 में मेजर हो गया, my lord. कब लगाया उसने आवेदन? He has filed an application in the year 2013, मतलब 10/10/2013. पॉलिसी क्या कहती है कि 1 साल के भीतर मेजॉरिटी अटेन करने के 1 साल के भीतर. सर मेजॉरिटी वो सर नई पॉलिसी, हमारा पुरानी पॉलिसी से कंसिडर. कौन सी पॉलिसी है आपकी? 94 की पॉलिसी से क्लेम कर रहे हैं. हाँ, ये 7 साल का था. ये हमारा कहना है कि वो नई पॉलिसी से कंसिडर कर लें. बिकॉज कैसे नई पॉलिसी से होगा? उसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं सर, मृत्यु की दिनांक पे जो पॉलिसी लागू थी उस पॉलिसी से कंसीडर करना है. मृत्यु की दिनांक पे कौन सी पॉलिसी थी एप्लीकेबल, ये बता दीजिए. मिलॉर्ड में काइंडली प्लीज टू प्लीज. हाँ सर, वो तो पॉलिसी सर 92 की थी. 94 की थी ना वो, तो उसके हिसाब से कि 94 की पॉलिसी में क्या लिखा है? It has to be considered within if he is measured within a period of 7 years, then चलिए, within a period of 7 years he had attained the age of majority. He has attained the age of majority. But he was sleeping over his rights. No, because he met with an accident. He was disabled 40%. ये 2011 में सर. 11 में हुआ ना. 10 में मेजर हुआ है ना. हाँ सर, ये 10 में हुआ है. ये 10 में 9वें महीने में सितंबर में हुआ. हाँ, और एक्सीडेंट कब हुआ? एक्सीडेंट की में सर 6वें महीने में 11 में. फिर चलिए, कुछ है नहीं. 13 का ऑर्डर 18 में चैलेंज किया है. हाँ, क्या करना है? Petitioner's contention is that petitioner's mother was working as ANM in the health department at Hoshangabad. She died in harness on 13/4/2003. Full stop. Date of birth, next paragraph. Date of birth of the petitioner is 13/9/1992. He attained age of majority on 13/9/2010. 10 में कैसे होगा? 2009 में आ जाएगी. 10 में डेट ऑफ बर्थ 92 2010. ठीक है, सॉरी, 2010. He had made an application in the year 2013. That application has been rejected considering the case of the petitioner for grant of compassionate appointment in terms of the policy of the year 1994. His case should have been considered in view of the subsequent policy. Next para. Shri T.K. Khatka submits that case was required to be considered as per the policy which was prevalent on the date of death of the bread earner of the family. Next para. Admittedly, petitioner had not attained age of superannuation prior to that, age of majority prior to that, and even otherwise, he was required to apply within 1 year of attaining the age of majority. Since that has not been done, petitioner is not entitled to grant of compassionate appointment. Next, that aspect has been considered by coordinate bench in reconsider के सर इसमें order. At this stage, Shri Aishwarya Sahu, learned counsel for the petitioner, places reliance on the orders of a coordinate bench dated 9/8/2021 in WP 19763/2016, Pragya Mishra versus State of MP and others, wherein facts of the case are that coordinate bench directed the authorities to reconsider the case
ये पैरा 3 में है, पेज 3 में उसमें हाँ। पॉलिसी पेज 3 में शासन के समस्त विभागों जिला कलेक्टर द्वारा अपने अधीनस्थ विभाग क्या लिखा, कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज 3 सर, पेज पैरा 3 ऑफ दिस ऑर्डर ना? दिस ऑर्डर सर। हाँ, पैरा शासन 3 द्वारा निर्णय लिया गया है। जानकारी प्राप्त कर दिनांक 31/6/2011 तक इस हादसे से प्रमाण पत्र सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्तुत करे जाएंगे कि दिनांक 13/12/2001 के पश्चात दिवंगत तो आपने एप्लीकेशन किस तारीख को लगाई है? 2013 में लगाई है सर। हाँ, फिर wherein record noting from from various clauses of the policy dated 13/1/2011 where a decision was taken by the state government to permit applicants where death had taken place after 13/12/2001 to give them an opportunity to apply for compassionate appointment up to 31/12/2011. A direction was given to reconsider the case, but in the present case, application was apparently filed in the year 2013, that is after the cutoff date mentioned in the policy dated 13/1/2011. Full stop. Next paragraph. Thus, in view of the settled legal position that compassionate appointment is neither an alternate mode of appointment nor it can be given from a back door as held in case of दे देंगे साउथ, वो रेलवे का है, दे दूंगा मैं आपको। इतना उनको लिखा है, प्रजापति साहब को लिखा है, इतना this court is of the opinion that there is no illegality in the impugned order denying compassionate appointment to the petitioner who had failed to apply in time. Petition fails and is dismissed. फाइल कहाँ है? 18 की फाइल कहाँ है? पता नहीं। ठीक है।